Okay, we will start the class. Yesterday we have discussed more or less about the block 1, and we cover mostly the important things which is coming under the first 5 units. And today we will discuss regarding the block 2. I think all of you have gone through the block 2 who are present in the class. Just I am make you confirm that. Have you gone through of the block 2? Can anyone tell to me? देखिଛ तुम माने समस्ते ब्लॉक 2 रे कोन टॉपिक आसुची कोन कवर करूची ब्लॉक 2 हमरो ओके ताले देखिनो केही काहर भी आईडिया नाही बोधे ठीक अछि हमरो ब्लॉक 2 होची हमरो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस specific to subject areas. As we know the social science, yesterday we have discussed overall regarding the social science subject, but here as we know that social science is a multidisciplinary subject, and it is mostly going to cover the contents related to geography, economics, history, and political science. And block 2 is also having 5 units, and all those units are regarding the teaching learning process specific to subject areas. It means specific to history, political science, geography, and economics. So on the basis of it, we will discuss what it is, what are the contents are there, and what are the main things required to discuss. And you must know regarding a social studies teacher, those the points we will cover here. Okay. So as we know that yesterday we have discussed the nature of social science, nature of the scope of social science, aims and objectives of teaching social science. But today we will discuss all those concepts from the point of view of specific subject. It means uh, nature of history, nature of political science, nature of geography, nature of economics. What are the different teaching learning strategies are there to teach history, political science, geography, and how it differ from each other. Okay. So first we will start from history. The unit 1 is going to cover regarding the history. What are the specific teaching learning process we are going to cover? Yes. मैडम काली जो किछि बाकी थला यूनिट 5 रो जो ब्लूप्रिंट आउ कोन किछि बाकी थला See, many more contents are there. If everything we will discuss, it is not possible to discuss within 2 hours. Okay, if you have any doubt, you can ask, then we can. Because unit 1, it is going to cover, block 1 module is going to cover many more things. Today, the second day is for the block 2. We have to, whatever the things we have to cover within 2 hours, that specific block we will discuss. And at last, if you have any doubt, last class in the 4th day, you can ask, we will discuss all those things. You have any doubt regarding the blueprint? Yes, ma'am. Yes, then we will discuss regarding the blueprint last day. Okay, last day, last half an hour, whatever the doubts are there, you just keep it. And last 4th day, half an hour, we will discuss regarding that. Today, because today we have to cover the block 2. Only for the 4 modules, 4 classes are there. And 2 hours, whatever it is possible, we will discuss. Yes. Okay. Okay. So today we will start history. Okay. So what is history? What is the nature of history, and how we must teach history at the secondary level? This is the main main area today we have to discuss about it. Okay. And as can anyone tell to me, yesterday we have discussed regarding the nature of social science. Can anyone tell to me what will be the nature of history? History as a subject, what is going to cover as a nature of the subject? A study of past thing. Yes, study of past good. matter. Yes, very good. Anyone else? Yes. Suppose we will discuss the nature of history, as we know that nothing is left in this world without history.
Yes, isn't it? Everything has its own history. So we can say that history is very comprehensive in nature. Whatever may be the subject, it has its own history. Yes. And for that purpose, we can say history is comprehensive in nature. It is continuous in nature. Yes. Suppose take example of the different disciplines like mathematics. Mathematics has its own history. Yes. Like that, no other any discipline is left without the history. So everything, every concept will come under this. So everything has its own history. So we can say that history as a subject is very comprehensive in nature. And also it is continuous in nature. Okay, it means at today, whatever is the present, tomorrow it will be the history. So we can say history, the subject has its not is there is no end of it. Every day something is going to include in history. So the very nature of the history is it is comprehensive and continuous in nature. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes. So are you agree with me? History is very comprehensive in nature. History is continuous in nature. Yes. And another thing, another nature of the history is that it is related to time. It gives us the idea, history gives us the idea to study the present by relating to the past. Okay. So I have prepared also a few PPTs for all of you. Just I want to share my screen. Just one of you can confirm whether the screen is visible to you or not. My screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So nature of history. So history is already I told to you, it is very comprehensive nature. It is continuous in nature. History helps us to study the present in the light of the past. Okay. And so history is everything, every moment if something is going to add in history. And history mostly study the relationship of the human being with the society. Because it is the study of the human being in relation to time and relation to place and relation to specific situation. So history is a subject which is most essential for us to know because it guides us how to lead the future on the basis of the past experience. So mostly the children will not get the interest to read history. Exactly not like that. Most of the students also has the opinion that history is like a mystery, but not exactly like that. History is a very interesting subject, but the thing is that we have to study it with understanding. And we will understand the history if we have sufficient geographical knowledge, if we have sufficient knowledge in all other subjects. It means we have the knowledge in political science, if we have the knowledge in geography, so that it will help us to understand the history. So history from the core point is it is related to all other subjects also. It is also the nature of the subject is that it is in a to a great extent or to a great degree, it is related to all other subjects. Are you getting me what I'm going to tell? Yes, ma'am. Yes. Okay. And can anyone add many other nature of the history? What other points also will come under the history? ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ nature of history ରେ ଆଉ କଣ ତମେ ମାନେ ଭାବୁଛ ଆଉ we can include also nature of history? ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ? ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏଠି include କରିପାରିବା? ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା ଖାଲି ଅନ୍ କରିକି ଅଛ ନା କିଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କିଛି ଫଲୋ କରିପାରୁଛ?
रेस्पॉन्ड करो अन्य माने किए रेस्पॉन्ड करो yes ma'am बुझी परछो मु जहा कहूची बे नेचर ऑफ हिस्ट्री में जहा डिस्कशन करले बुझी परलो जोठी आज्ञा न बुझी परछो कहि परिबो जे मु बे पचले आउ हम एठी किछि ऐड करि परिबा कि नेचर ऑफ हिस्ट्री जोटा मु गोटे पीपीटी तयारी करछि ओनली आई हैव इंक्लूडेड 4 पॉइंट्स आई फील दैट दीज ऑल आर द 4 points is going to cover each and everything so can you add something more to that आउ किछि हम एठी इंक्लूड करि परियो ना we will go further मैम हमें कल्चर विषय रे किछ ऐड करि परिबे कि नेचर रे हिस्ट्री रे आज्ञा कौन करि परिबा कुहो तमे कोन भाबुछो कोन चिंता करछो एठी कोन हमें कल्चर रिलेटेड ऐड करि परिबा भाबुची कल्चर ऐड हेई परिबो बोली माने हम जो माने पास्ट जो कल्चर ता थिला तो ताको हमें बेस करी कि हमें प्रेजेंट रे किछ कल्चर को चेंज करि परिबो आमे सुनो एठी हमें नेचर ऑफ हिस्ट्री डिस्कशन करूछे तो एठी कल्चर रिलेटेड नेचर ऑफ हिस्ट्री रे कोन आसीबो we can say that history the main nature of the history is to study the culture of the different civilization or the different time of the different time या कोई हमें ऐड करि परिबा if you can say that history mostly study the culture of the different civilization and also study of culture from time to time okay yes ma'am okay yes ma'am leave it here so mostly in the 4 points we are going to cover everything one thing we can remember history is more comprehensive in nature one is continuous in nature it gives the idea to us to live in present with by relating to the past and it is the study of human behavior in relation to time and history is also not only history to study the past history is also story of the growth and the human consciousness okay next we will discuss regarding aims and objectives of teaching history why the history as a subject is included in our curriculum is it essential for our students to study the history do you feel it is essential for our school students every one of us must know about our history Yes, ma'am. Yes, ma'am. how why to what extent it is going to help our children to lead their life because we know that school education is preparation for the children to lead their life in the society so how the study of history is going to help our children to lead their life in the society here we can say that study of history is must essential for every child because we learn from our past experience. Children must know that what the incidents, what the situations occur in the past, and out of that, what they have learned, and on the basis of it, what the decision they can take in the future so that they can lead their life properly in the society. Okay, so study of history help our children in many ways okay it helps to develop the critical thinking it provides the idea how to avoid the circumstance the situation and it helps to develop the diplomatic ideas among our children okay so there are the different main objectives are there for teaching history at school level so first thing is to promote the self understanding to understand the self there is need of study of history and another is to know about the time space society to make a pace with the development to gradually children must know how the civilization has developed what was the way of living of our peoples in the past civilization and gradually how the development occur in the different field so they must know about that so it can help us also to them to for the future innovation future discovery it will inspire them okay so for that purpose study of history is also motivate our children to move forward and another is that it strengthen the intellectual abilities of our learner are you agree with that study of history is going to
strengthen the intellectual ability of our learner? History पढ़िबा द्वारा पिला मानकर intellectual ability रे development हुए. किए कहि परिबो how you can justify it? Okay, think for a while and tell to me. History also help us to develop the tolerance ability among the students. Okay, and it cultivate positive outlook. It addresses controversial issues. It helps to resolve the contemporary and social and individual problems. Okay, and also it helps to foster the national feeling, to foster the international understanding. So these are the main objectives while we are going to teach history at school level. If you are not agree with any one of the point, you can identify or you can ask. Whatever I have mentioned here in the PPT regarding the aims and objectives of teaching history, are you agree with all these points? Yes, ma'am. Okay, then you tell to me how it is help for development of intellectual abilities, history. ମ୍ୟାମ୍ ପୂର୍ବର ଘଟଣାକୁ ସେ ଜାଣିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରେ, ମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣେ, ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଛି କିଛି ଶିଖେ. Okay, okay, good, very good. So it helps to develop the intellectual ability. Yes, because we know everything we learn from our experience. So history is the reflection of the past experience. Okay, at the time of reading history, no doubt from as a theory we are going to read from the textbooks, but it takes us to the past. Okay, and due to those activities, what the pros and cons occur in the society, children able to know about that. So they can understand that saying the wrong and the wrong things must not repeat, and whatever the good things are occurred, those things must we can again implement in our society. So in this way it is going to help the intellectual ability of our learners. Okay, so whatever here the points I have mentioned, these all the things is going to help in the study of history. So that's why these all comes under the aims and objectives of teaching history. So next we will move forward. We will move to approaches to teach history. Yesterday we have discussed the different approaches to teach social science. Can anyone remember whatever the approaches we have discussed yesterday? Yes, आमे काली किछि approach social studies discussion रे कोडा कोडा हमर व्यवहार रे एडा को डिस्कशन करिथिले के मते टिके मने पकेबो कोन डिस्कशन करिथिले आ सेटा हिस्ट्री रो अप्रोच टू केमिति डिफरेंस आमे एटा डिस्कशन करिया. Disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary. Yes, very good. Very good. Thematic. Very good. Thematic, inductive, deductive, and constructivist approach. Okay. So yesterday we have discussed disciplinary approach, which I told it is a traditional approach. Okay, and we must learn the social science by relating with other subject, which is called as the interdisciplinary. And we must discuss every social science topic from the different point of view, from the different subjects point of view, which is called as the multidisciplinary approach. And thematic on the basis of the theme, and inductive, deductive, and constructivist approach. Yes. Yesterday we have discussed all those things. Like that, there are also certain approaches to teach history. Okay, and those approaches also here it is mentioned as the methods of teaching to teach history. Okay, if approaches, see here I have mentioned here dialectical approach. Dialectical approach is a approach which mostly will comes under a disciplinary approach. It is a traditional approach. Yes, and in this approach is suggested by Socrates. Have you listened about Socrates? Socrates janicho samaste?
Yes. ना सुनिचो? Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା Yes, he was a great philosopher. He was a great philosopher, and he has given the knowledge in every field. Okay, Plato, Socrates, Aristotle, they have contributed their knowledge mostly in every field of education. Okay, and he has given a approach how to teach history, and at that time the approach suggested by him is known as the dialectical approach. It means in this approach, importance has given on the dialogue or preparation of the questions. On the basis of the questions, we can teach the history to our children. And those questions must be the thought-provoking questions. Okay, which can create a thought, and the children can discuss on the basis of that particular question, and they can give their own views and own thoughts can be shared, so that by help of which we can teach the history, and that is called as the dialectical approach. It is called as the Socrates approach. We can say it is called as the dialogue approach. It is based on the dialogues, and in the form of the dialogues we are going to ask the different questions. We will give the questions to our students, and every students will share their opinion on the basis of those questions, and on the basis of it we can teach mostly the topics to our children on history. And what type of in history also, whatever the controversial issues are there, where the opinion and the we want to create a thought among our students, we want to listen from each and every students, that is called as a dialectical approach. At the time of teaching such contents, we mostly use the dialectical approach. बुझी पारलो कौन कहली dialectical approach? ଆଜ୍ଞା Yes, ma'am. ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଟ୍ କୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, at that time we can use this approach. Okay, but mostly this approach is not going to follow at the time of teaching history at the school level, but it is a very good approach for teaching history at the secondary level, dialectical approach, because we know at the secondary level already that critical thinking ability has there among our children. At the secondary stage, in the 9th and 10th, the children are having the critical thinking ability. So whenever we are going to teach certain issues, at that time we can take the use of this dialectical approach. Yes, so like this, another approach is the biographical approach. कौन बुझुछो biographical approach माने? biographical approach. ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟକୁ ନେଇକି କିଛି କହିବା। Yes, biography means we know the life history of regarding the eminent personalities. Okay, when we are going to teach regarding the eminent personalities, at that moment we can take the use of this biographical approach. Suppose we want to teach regarding Gandhi. Okay, we can take the use of biographical approach. Yeah, we can take the use of the biographical ideas regarding the particular eminent personalities, and by help of that we can also teach the history to our students. Yes, then another is the scientific approach. Are you agree that we can teach history by using the scientific approach? कौन scientific approach use करके हम history पढ़ाई परिवा पिला मानन को? ना हे परिबोनी ए अप्रोच ता हम यूज करि परिबा हिस्ट्री पढाइबा पई साइंटिफिक अप्रोच मैम ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ଆମେ डाटा कलेक्शन କରିବା ପାଇଁ କହିବା कि जो କିଛି पिक्चर कलेक्शन କରିକି କହିବା जो आनिया ପାଇଁ କହିବା। साइंटिफिक मींस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर कोन बुझु छ साइंटिफिक माने कोन साइंस କରିକି ସେମାନେ यस यस को के कहउतिले ମୁଁ କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିକି ସେମାନେ କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା। yes very good
Here, use of scientific approach means whatever the different historical incidents occurred or whatever the contents we are going to teach in history, we can make the critical analysis of it. Okay, we can analyze those concepts from the present point of view. Okay, and we can make the synthesis of it. If by using these analytic analysis and synthetic synthesization of the contents, then it is called as a scientific approach. ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢଉଛେ ଯଦି ଆମେ ସେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ସିନ୍ଥେସାଇଜ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ରିଲେଟ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସ ସହିତ ଆମେ ରିଲେଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛେ, then that approach is also known as a scientific approach. And this is also a very good approach to teach history parallelly to teach with the modern development. Okay. बुझिपारे एटा कोन कहले के गोटे एग्जांपल देबो को कंटेंट को हम साइंटिफिक अप्रोच रे पढै परिबा हिस्ट्री रो. Okay, you think later we will come to it. We will discuss all these things. Another approach. मैडम ख्रीष्टपूर्व आ ख्रीष्टाब्द जदि पढ़ेबो सेटा पढ़ेला बेले भी साइंटिफिक अप्रोच दरकार कि पिला जानि परिबेनी जे ख्रीष्टाब्द काहू कह जाय ख्रीष्टपूर्व काहू कह जाय. त ख्रीष्टपूर्व जो माने कर 400 माने 12 ख्रीष्टपूर्व 412 कि ख्रीष्टपूर्व 800 ए भितरे से माने कंफ्यूजन होंती. हमें एटा कहि परिबा जे दिस इज कोन ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द सेमति किछि नथला. दिस ऑल आर ह्यूमन मेड. हमें सेटा निजे तयारी करछे फॉर आवर वेल अंडरस्टैंडिंग. ओके, हमें हमर अंडरस्टैंडिंग पाई दिस इज जस्ट ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक माइनस जेमति हमें कहू जे ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द रो एनालिसिस ता होची सेया. हो कि नहीं, हमें एक रु जदी गणी गणी जेमति जाउचे हमें आगो को जाउचे पछुआ गणीला हम जोटा सेटा को कहूचे हमें ख्रीष्टपूर्व. ओके, सो हमें जेतले मैं ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द कथा कहूचे जेतले पिला मानको 6th क्लास रे सेटा से कांसेप्ट पुरा 6th माने वेरी बिगिनिंग रे आसे से कांसेप्ट. हमें सेतले ऑलरेडी हमर पिला माने माइनस रो कांसेप्ट बुझी सारथांती. हाउ माने पछु को हमें भी कैलकुलेशन केमिति करि परिया beyond the one also how we can calculate, before the one also how you can calculate. So those ideas also we can give by making an analysis, by comparing it with the mathematical analysis. Okay, there we can use the scientific approach. Very good. तमे आ विषय रे चिंता करू तो जति तमर किछि डाउट अछि हम अधिक डिस्कशन करिया. We will move all others the methods like dramatization method, field trip method, storytelling method and postmodernist approach. Okay, storytelling approach, field trip approach, dramatization approach and postmodernist approach. Dramatization approach बधे नारु ही तमे बुझी पारुथिबो. We can teach history by conducting the drama, then it is called as a dramatization approach. Okay, by making the role play, then it is called as a dramatization approach. And this approach is mostly used at the secondary and higher secondary level. And storytelling approach is mostly used at the elementary level. For at the time of teaching the 6th, 7th and 8th student, mostly you are using the storytelling approach. But at the time of teaching the 9th and 10th students, we are using the dramatization or the role play approach. Okay, like this field trip. Field trip means if any historical places are available or any museum is there, and we can take our children to there to directly observe the things and they can learn about our history if it is possible. So we can make a trip of our students to the particular place and we can teach the content. That is called as a field trip approach. Like postmodernist approach. Postmodernist approach is nothing else. It is called as a constructivist approach. Yesterday what we have discussed. काले हमें गतकाली हमें आलोचना करिथिले व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. मैडम आउटसाइड फील्ड ट्रिप करिले. Field trip means we can take our children outside the classroom to the different place which are related to our content of teaching history. Suppose हमको आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऊपर पढेबार अछि. आम पाखरे किछि मंदिर अछि, आमे पिला मानकु डायरेक्ट सेट की नै परिबा. आमे से जो आर्कियोलॉजी विषय रे पढै परिबा किबा
जे कोनोसी गोटे पर्टिकुलर डायनास्टी विषय आमे पढौचे से डायनास्टी रिलेटेड किछि जदि हमर सराउंडिंग रे किछि अछि आमे सेई जगह गुडी को पिला मानको डायरेक्ट धरि कि विजिट रे नै परिबा से मानको डायरेक्टली ऑब्जर्व करिवार स्कोप दबा तो आमे ट्रिप रे नै कि ट्रिप माने बुझुचो बाहर को नबा क्लासरूम रो बाहर को पिला मानको नै कि जिबा फील्ड को नै कि जिबा okay and by help of that we can also teach and that is called as the field trip approach मैम पीपीटी शो करूनी रोल प्ले और ऑब्जेक्ट ड्रामेटिकल एके केमिति हबो ये पीपीटी शो करूनी ना मैम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री सेठी अछि approaches अप्रोचेस शो करूनी काहा को भी देखे जाउनी पीपीटी नो मैम नो मैम वर्तमान एम ऑफ द okay let's maybe some network issue is there I will stop sharing and again I will share okay again I Okay, will share. ma'am. Just wait I will share again एके केमिति हबो टिके रही तो कि कोन ड्रामेटिक केमिति हबो रोल प्ले संगे ड्रामेटिकल केमिति एका हबो कोन कहलो मैडम आपण कहले ड्रामेटिकल संगे रोल प्ले केमिति एका हबो बुझी पाइलुनु ना ना रोल प्ले एका हबो मु कहलिनी dramatization is a approach where we can assign the roles different roles to our students and can teach आमे तो गोटे पर्टिकुलर कंटेंट को नेकी गोटे ड्रामा कंडक्ट करिवा we have to assign the different role to our students आज्ञा मैम हाँ सेटा कहली dramatization or role play I am not going to tell at the time of conducting a drama if any historical topic is there on the basis of which we can conduct a drama okay here now it is visible ppt is visible Yes, ma'am. यस मैम यस मैम applications to teach history yes so there we can assign the different role in a drama when we are going to conduct a drama we have to select the different students to play the role okay they can play the different role and we can assign and on the basis of which also we can teach a content history content can be taught to our children by using dramatization as a method बुझी पारलो जे पचारुथिलो ओके सो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच होची जोटा कि हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ला कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमें काली से विषय रे बहुत किछि डिस्कशन करिचे आ सेही अप्रोच रे मध्ये हमें हमर डिफरेंट हिस्ट्री रा कंटेंट को पढै परिबा दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच सो नाउ वी विल मूव टू रिसोर्सेज फॉर टीचिंग हिस्ट्री कौन हमर रिसोर्स हमें यूज करि परिबा एज yesterday we have discussed the different types of teaching learning material TLM for teaching social science like that what are the specific teaching learning materials are there we can take the use of it as a resources for teaching history sorry here resources spelling mistake is there resources resource okay so the mostly the TLM used for teaching history are our textbook we can take the use of the museum because we know in the museum there are the collection of different items which belongs to our historical period we can take the use of map chart documentary films okay films documentary timelines artifacts and archives so these are the mostly the things or the realms also we can yesterday we have discussed regarding the realms if the real items are available then also we can take to our classroom to teach history so different these all are the different teaching learning material mostly we use at the time of teaching history मैम टिके आर्टिफिकेट्स माने कोन कोई artifacts means those only that the items the collection of the different facts in a tabular form or in the form of a data collection on the basis of that we can take the use at the time of teaching the history ame bibhinna jaro jinisar fact uda collect kari gote tabulation kariba okay taku gote graphical way re present kariba
then it is called as the artifacts and archives. Collection, these are the similar terms we are using for the collection of different pictures, different data, different information in a particular frame. Then it is called as the artifacts and archives. ଦିଟା ଯାକ ସେମ୍ ପ୍ରାୟ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କହୁଛି ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଇୟର୍ସ ନେଇପାରିବା, କିଛି ଏଥିରେ ପିକ୍ଚର୍ସ ନେଇପାରିବା, ସେମ୍, ମୋଷ୍ଟଲି ଦ ସେମ୍। ଓକେ, ତମ ମଡ୍ୟୁଲ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦେଇଥିବ, ଟିକେ ପଢି ନବ, ତମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଟିକେ ତମେ ପଢି ସେ ମଡ୍ୟୁଲ ରେ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଦେଇଥିବ, ଟିକେ ଦେଖି ନବ, ବୁଝିଯିବ। ମ୍ୟାମ୍ ବହି ଆସିନି। କାଲି କହୁଥିଲୁ ପା 2ଟା ବହି ପାଇଛ। ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଆସିବ ବହି। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ତମେ ପାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖି ନବ, ଯେ ତମର ତ ଅଛି ଆହୁରି ଟାଇମ ବହୁତ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖି ନବ, ବୁଝିଯିବ। Artifacts and archives, these are mostly the collection related to our past which we are going to represent in the form of a collection, in the tabular form or in a graphical representation, whatever may be, how we are going to represent all these things in a particular frame. So ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଡିସ୍କସନ କଲେ, these all are related to history. ହିଷ୍ଟ୍ରି ର ନେଚର କଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ର ଏମ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କଣ, ଆପ୍ରୋଚ କଣ, ଆମେ କଣ ରିସୋର୍ସେସ ୟୁଜ କରିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢେଇ ପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର ୟୁନିଟ 7 ହଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ହେଲା, ଆଜିର ଯୋଉ 4ଟା ୟୁନିଟ ଅଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ 4 ସବଜେକ୍ଟସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି and economics. So now we will start discussion regarding the teaching learning process in political science. प्रथमे आमे कहबा what is political science, what do you mean by political science? Political science माने कोन बुझुछ त? Study about nation and state. Politics. Study about what is politics? ये word तो तने बहुत यूज करू, but what is the exactly meaning of the word politics? कहि परिबो कि? Okay. Political science is the science which study how to rule or how to regulate the human society in human beings in the society. Okay, this is a subject which is created by us, by the human beings. Suppose we can say geography, it is a natural subject. History, it is the subject is also which is already spontaneously occur, we are going to study it. But political science is the science of the human beings, how to rule or regulate in a society. Okay, so as we know that by being a part and parcel of the society, when the people are living in a society, there are certain rules, regulations we are going to frame. And these all rules and regulations are the human made. Okay, and it also differ from place to place, from time to time, or from civilization to civilization, or from dynasty to dynasty. So these all are the human, and according to the time also there are the changes are made. So to make the human life regulated, there are the certain rules and regulations in the society, and that science is called as the political science. And it is a very important part, like history also, political science is a very important part of social science. And every individual must have ideas regarding the political science. Do you feel that teaching of political science at school level is going to help us in any way to lead our life in the society? Respond, Yes, please. ma'am. Yes.
It is going to help. Yes. Okay. How Yes, it is ma'am. going to help? How it is going to help? If our children will not read political science at school level, so they cannot lead their life in the society. ଯେମିତି ଆମର ଫାଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଅର ବିଷୟରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। Yes. So as we know, we are living in a society. We are living under a particular government. We have a different type of government, and every government, every country have their own ethics, own rules, regulations. If the child will not aware about all those things, so how the child can lead the life in the society? Yes. So political science knowledge must essential for every child in the future to lead the life in the society. Okay. So in political science, we are going to study many contents related to our society, to our country, regarding the government, regarding the rules and regulation of the government, regarding our constitution. So many more things, not only regarding our country, regarding the world, whatever the different forms of government are there in other countries. So the political science knowledge is most essential for our children to lead the life smoothly in the society. Okay. So it must be taught in a very sensitive and very particular way to our children. So before going to discuss how to teach political science, first we will discuss what is the nature of political science. As we have already discussed, it is the study of human relationship. Are you agree? Political science is the study of human relationship. Yes, Political ma'am. science is the subject of study of human relationship. It helps us how to maintain the relationship between different individuals, how to maintain the relationship between individual and the society, how to maintain the relationship between different organizations. Okay, so it is called as the study of human relationship. मैम आमे It is फर्स्ट also known as मैम आमे जो फर्स्ट हाँ, कहले दैट इज पॉलिटिकल साइंस जे हाउ टू रूल एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन सोसाइटी तो जोटी जोटी शासन आउ शासित कथा कहउची सेठी ह्यूमन को नेकी कहजिबो ना मनीष मनीष माननको नेकी ही शासन करा जिवो मनीष माननको द्वारा ही शासन रो रूल तयारी करा जिवो that's why I told this is created by the human beings. Already I told ह्यूमन रिलेशनशिप टा पॉलिटिकल साइंस रे निहाती इंक्लूडिंग हेकी रहउची. Yes, yes. And we know that human relationship also, there are certain rules and regulations how we can maintain the relationship in the society. Okay, those rules, regulations, criteria, every individual must aware about it. आमे जेतेबेले गोटे सोसाइटी रे लिव माने बसवास करू, we must have the idea how you as an individual, how we are behaving inside of our home, we are not behaving outside of our home with others. Okay, that every child must learn. मते घरे केमती रहिबार अछि, मते का सहित केमती व्यवहार करिवार अछि, and for everything there are amar किछि ना किछि सोसाइटी किछि नॉर्म अछि, किछि रूल अछि, किछि रेगुलेशन अछि, मते कोन कहिवार अछि, कोन न कहिवार अछि, मते को वोकैबुलरी यूज करिवार अछि, कोटा यूज करिवार नाही. All these rules, regulations are created by the human beings, and those things children must aware about it, and political science is going to taught all those things to our children. That's why yesterday we have discussed study of political science is going to make a person civilized. Yes, it helps to create the good citizens. सेटा आउथरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रे भी एबे डिस्कशन करिबा. ठीक अछि. So political science is a study of human beings in surroundings. Okay, आमे मनुष्य मानको भी केमिति जानिमा, केमिति चिन्हिबा, केमिति आमे काहा सहित केमिति व्यवहार करिबा, सोसाइटी रे केमिति बंचिबा. These all are the main nature of political science, and aims and objectives of political science is to develop all such things among our children. So it helps us
to develop the critical understanding about the democratic and secular country. As already we know that different type of countries are there in in the world, okay, and we are living in a democratic country. So as a being a part and parcel of the democratic country, what are the rules and regulations are there we have to follow, okay, and what is secularism, what is socialism, what is soberism, so what is republic, all these the knowledge. The main objective of teaching political science is to provide the idea regarding the different concepts, political concepts, to our children, okay, to understand the basic ideas of our constitution. What is constitution, what is amendment, what are the articles, what the sections, how the constitution is going to mention each and everything, and rules and regulations for different category of the people. All those things our children must know before they are going to called as the citizen of a country. So study of political science is a very sensitive issue. It must taught properly, in a properly way also to our children, but mostly it is going to neglect. Our Bartaman school jo where ame political science podhoje, there is something missing. Our children are not able to develop it properly. ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ 9th 10th କାହାର ଭିଡିଓ ମ୍ୟୁଟ କର, ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛ କିଏ ମ୍ୟୁଟ କର, ଶୁଣା ଯାଉଛି ତମର ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହଉଛି। ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛ କିଏ ମ୍ୟୁଟ କର, ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ ହଉଛି। Okay, so the main objective of teaching political science is to develop all those things among our children, to understand the importance of international relationship. As we know that political science is going to teach us how to maintain the relation not only with the human beings, as a state how we will maintain the relation with other states, as a country how we will maintain the relationship with other countries, how we can work for the development of the world, okay, and for international understanding, for national understanding, for the development of a nation. So really study of political science is much more important at the school level, okay, and we have to teach the political science very sensitively to our children. And for that purpose we are going to use different approach and methods for teaching political science. Yesterday we have discussed regarding the inductive deductive approach, and it is the best approach to teach the different political science concepts. बुझी पारथिलो काली समस्ते what is inductive and deductive approach? म्यूट को तो तारो ऑन अछि। बुझी पारछ समस्ते कि कहबो मते what is inductive deductive approach? Here the four important approaches are mentioned for teaching political science: inductive, deductive, constructivist, and interdisciplinary approach. All these approach yesterday we have discussed: inductive approach, deductive approach, constructivist approach, and interdisciplinary approach. Ye mate kahiba what is inductive deductive approach, how it can be used for teaching the political science content. मैम इंडक्टिव अप्रोच होची के माने स्पेसिफिक टू जनरल को हमें जीवा Inductive approach. आगे डिडक्टिव होची जनरल टू स्पेसिफिक को जीवा। अच्छा, जनरल टू स्पेसिफिक को जीवा माने जनरल मतलब हमें मुझे पढ़े को चाहूची कि गवर्नमेंट विषय पढ़े को चाहूची, तो गवर्नमेंट होची गोटे जनरल जिंस, तो जनरल रु हमें आसीबा धर मु पढ़ेली सेंट्रल गवर्नमेंट तब स्टेट गवर्नमेंट तब हमर विलेज रूरल एरिया को आसीली, तो सेटा को जोटा हुआ जे सेटा को जनरल टू स्पेसिफिक। Okay, not exactly like that, but you told.
डिडक्टिव अर्थ होची प्रथमे आमे रूल टा कोन पढेबा देन इट इज हाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर ए स्पेसिफिक सिचुएशन ओके देन इट इज कॉल्ड एज डिडक्टिव but inductive means first we will take the specific examples and from all the examples at last we will generalize the rules and regulations okay then it is called as the inductive and inductive and deductive approach is going to use simultaneously आमे खाली डिडक्टिव अप्रोच केबे यूज करी की यूज करू ना किबा खाली इंडक्टिव अप्रोच केबे भी यूज करा जाय नाही these all the two approaches are going to use simultaneously parallelly okay inductive and deductive approach so जेतेबेले आमे पॉलिटिकल साइंस रा कांसेप्ट पढोचे आमे ऑलरेडी जानि छे जे all the rules and regulations in the political science are generalized by the human beings and these are not the permanent if any problem arises it is going to change according to time yes so nothing is permanent that this rule is made so it will be always permanent if the any rule is there it is not applicable in the specific situation then we are going to change it also so for that purpose also there is the different amendments are there in our constitution so mostly inductive deductive approach is a very popular approach to teach the different political science concepts to our children and these two approach mostly we are using parallelly बुझी परलो सेमती कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑलरेडी हमें बहुत ए विषय डिस्कशन कलेनी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम जानि छी हमें किछि नुवा कांसेप्ट पिलांगु सिखेबानी दे विल एक्सप्लोर एवरीथिंग they will know each and everything and as a teacher we will be there as a facilitator okay if any topic from the political science we want to teach we can provide all the resources to our children they will study they will explore and wherever they are facing the doubts as a teacher my duty is to facilitate them okay so that is the constructivist approach and interdisciplinary approach at that time of teaching political science we are going to relate it to other disciplines like we teach political science by relating to geography we teach political science by relating to history then it is called as a interdisciplinary approach as we know that to understand political science also geographical knowledge is must essential are you agree je without geographical knowledge ame political science ର concept भी बुझियो हम पई कष्ट होबो are you agree with me Yes, ma'am. केमिति काहे कि जो आमे तो पॉलिटिकल साइंस पढेबा ज्योग्राफी नॉलेज सिखमे कोन दरकार काहे कि से माने बुझी परिबेनी मैम पॉलिटी पढ़ला बेले जदि कौन स्टेट आसला तो से स्टेट भी ज्योग्राफी नॉलेज दरकार जे ता भौगोलिक अवस्थितता विषय जानवा दरकार yes suppose जका मु मोर हमर कॉन्स्टिट्यूशन विषय मु पढौची हमर कॉन्स्टिट्यूशन र विभिन्न प्रकार हमर आर्टिकल अछि को आर्टिकल ता हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हला बेले जो रूल ता हमें को कंट्री रु नै कि आछि हमर अछि ए आर्टिकल ता हमें ए नियम ता हमें एक कंट्री को देखि कि तयारी करि छै दे मस्ट हैव आइडिया आमे जेतले हमें फंडामेंटल राइट्स कथा कहूचे फंडामेंटल राइट्स हमें काहा को देखि कि तयारी करछे हमें यूएसए को देखि कि करिछे हमर अछि हमर तमे जानि थिबो कॉन्स्टिट्यूशन र विभिन्न नियम गुडा का हमें अन्य देश मान को सिखिचे जेमति हमें जेतले एबे फंडामेंटल ड्यूटी कथा कहूचे फंडामेंटल राइट्स कथा कहूचे विभिन्न प्रकार हमर जो रूल गुडा को अछि हमें we borrow all those ideas from the different countries at that time also children must know that माने जदी सेमानकर जदी country कोन continent कोन then the physical variation कोन यदि boundary कोन ए सब विषय जदी तांकर knowledge नथिबो then how they will understand all those things so all these concepts आमे जेतेबेले political science पढुचे हमर historical knowledge मध्ये रहितबा दरकार otherwise they cannot understand जे केतेबेले हमर constitution हला सेतेबेले को लोक माने थिले सेतेबेले को गवर्नमेंट थिला काहे कि हमर हेई नथिला काहे कि हमर देशर constitution ए मसिया रे तयारी हला they must know they must have knowledge regarding the history otherwise they cannot understand so that's why when we are going to teach the particular subject political science at that time we have to make it interlink with history with geography with economics then it is called as a interdisciplinary approach okay and by help of this approach also different methods we are using like lecture method discussion method debate method seminar method panel discussion method individual or group project method
ए मेथड गुड़ाक विषय तो आम प्राय काली डिस्कसन करथिले लेक्चर मेथड को मेथड रे तमरो डाउट अछि किछि माने टिके जानिया को चाहू कि बुझी परनो को मते हम सेटा पर्टिकुलरली डिस्कशन करबा ए जो मेथड गुड़ाक मु एबे कहूची आमे मोस्टली ए मेथड गुड़ाक पॉलिटिकल साइंस पढिया पई यूज करू लेक्चर मेथड जानि परछु समस्ते मैम डिबेट मेथड विषय टे कहतो डिबेट मेथड मीन्स तमे डिबेट कंपटीशन कराउची जानिचो जेमते हमें गोटे टॉपिक दबा पिला मानको पिला माने से ऊपर से माने डिबेट करिवे हैला किए प्रॉस रे कहबो किए कॉन्स रे कहबो हैला किए तार फॉर रे कहबो किए तार अगेंस्ट रे कहबो एंड एज ए टीचर यू विल कंडक्ट द डिबेट आमे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स माने गोटे टॉपिक देले हमर टॉपिक मनकर अछि डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी भलो ना डेमोक्रेसी भलो आमे पॉलिटिकल साइंस रे पढाइया को चाहू जे पिला मानको आमे सेटा को कोन गले गोटे डिबेट रे टॉपिक देले पिला माने ग्रुप हेले आमे पिला मानको ग्रुप करिवा को पिला माने तार ऑटोक्रेसी विषय रे कहिबे ऑटो किबा फॉर रे कहिबे कि अगेंस्ट रे कहिबे डेमोक्रेसी रो फॉर रे कहिबे कि अगेंस्ट रे कहिबे से माने तांकर डिबेट रखिबे डिबेट रखि सारला परे सब ग्रुप से माने डिबेट रखिबे रखि सारला परे आमे तापरे लास्ट को एज ए टीचर आमे तार को कंक्लूड करिवा जोहा पिला माने कहिले ऑटोक्रेसी रो मेरिट्स कोन डिमेरिट्स कोन सेमति डेमोक्रेसी रे भी मेरिट्स कोन डिमेरिट्स कोन ओके डेमोक्रेसी रो एसेंशियल कंडीशंस कोन केतेबेले डेमोक्रेसी टा गोटे भलो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली कहि परिबा सो एई जिंस ऊपर डिस्कशन हो ता सेई डिस्कशन रो पिला माने बुझी परिबे बुझी परलो जेमते हमें डिबेट कंपटीशन करू एज लाइक दैट आल्सो इट कैन बी यूज्ड टू टीच द पॉलिटिकल साइंस टॉपिक्स काले में सेमिनार मेथड विषय डिस्कशन करिथिले गोटे टॉपिक रो डिफरेंट डायमेंशन रे पिला माने सेमिनार प्रिपेयर करिवे से माने सेमिनार प्रेजेंट करिवे लास्ट को एज ए मॉडरेटर एज ए टीचर you will conclude it and other students who are there not participated in the discussion they will put their question and those questions must be answered by the person who have presented the seminar otherwise if they are unable to answer as a teacher as a moderator you will follow the discussion सेमती पैनल डिस्कशन भी काली थिलो समस्त क्लास रे आज जो माने क्लास करूछु यस मैम गत काली क्लास रे थिलो अच्छा पैनल डिस्कशन हमें काली डिस्कशन करिथिले बुझी परछो व्हाट इज पैनल डिस्कशन यस मैम यस मैम okay then it is not required then individual or group project method कोन बुझिछो ना डिस्कशन करिबा व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड आउ थरे टिके कोंतु कोडा कोडा पैनल मेथड पैनल डिस्कशन रो अर्थ माने मेथड होची whenever a topic is there on a particular content we are going to teach on that particular content what are the questions are there we will ask to our children and we will invite to different panelists ame kete jana panelist ko dakiba okay whatever the questions are there we will assign those questions on the basis of the expertise to the panelist जो पैनलिस्ट मान को डाकिबा से भी प्रिपेयर ही केसबी तांकर से एरिया ऊपर बहुत नॉलेज अछि but still what are the main concerns from which point of view we want to discuss we will give those questions to the panelists they will prepare they will come and they will give their own views regarding all those regarding the topic so every panelist will speak about the topic and that the students will be there as the audience and as a teacher you will be there as a moderator you have to conduct the panel and you have to ask the questions to the panelists so they will answer and from that discussion the children will be learned at last we have to conclude the discussion by conclude that discussion then it is called as a panel discussion सेते किछि जण पैनलिस्ट रुहंती जणे मॉडरेटर रुहंती आउ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रुहंती से माने क्वेश्चन अराइज करंती जेतेले पैनल डिस्कशन में जा मनरे जहा भी किछि डाउट आसला से माने क्वेश्चन अराइज करंती एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट द डिस्कशन इज गोइंग टू अकर बट वन पर्सन विल बी देयर टू कंडक्ट ऑल दिस थिंग्स हु इज कॉल्ड एज ए मॉडरेटर बुझि परलो यस मैम मैम पीपीटी टा आउ थरे शो करूनी अरे मु तो ये करूची शेयर करूची मु आउ थरे शो करूनी
बोधे किछि ନା नेटवर्क 10 इश्यू ମିନିଟ୍ रहुछि। ହେଲାଣି ସେଠି ରହିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଶୋ କରୁନି। ସେଇଠି It's wait. ରହିଛି ଅଟକି ରହିଛି। Okay, okay, wait. Again, I have to stop there. Hmm. ଏବେ ଦେଖାଗଲା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଗଲା। Okay. Okay. So individual and group project method विषय समस्त जानिथिबो मु भाबुची। आमे पिलामानकु प्रोजेक्ट देकी इंडिविजुअली पिलामानकु असाइन प्रोजेक्ट कले दैट इज कॉल्ड एज ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। यदि ग्रुप रे में प्रोजेक्ट असाइन करूचे देन इट इज कॉल्ड एज ए ग्रुप प्रोजेक्ट। And project method is also a modern method which is based on the philosophy of pragmatism. Here mostly the students will do the most of the things and the teacher will just work as a facilitator. स्कूल मानक प्रोजेक्ट दिया जाए डिफरेंट टॉपिक रे पिले माने डाटा कलेक्शन करके प्रोजेक्ट तैयारी करंती तैयारी कर साला पर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करंती और डिफरेंट टॉपिक रे जब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुए अलगा पिला माने सेमानकर प्रोजेक्ट छोड़ा अलगा प्रोजेक्ट विषय रे भी जानि पारंती। ओके, so that is called as the project method and that method also can be used for teaching the political science topics. बाबूजी हमें प्राय मोस्ट ऑफ द मेथड गुडा विषय डिस्कशन कले ना किछि डाउट अछि हम आगु जिबा। मैडम लेक्चर मेथड टा टीचर सेंटर मेथड रे जीवा कोन यस lecture लेक्चर method मेथड टा is टीचर मेथड टा teacher जीवा centered method. Yes, it is a traditional approach and method and it is a teacher centered method. आज्ञा। So now we will discuss what are the teaching learning resources are there in political science. Political science रे हमें teaching learning resources कौन यूज करि परिबा तो विभिन्न प्रकार तो हमें जेमति जानि छी हमर विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट्स अछि हमर political science related amar jaha jaha document acha ami jemti kahiba ki amar constitution of India itself is a teaching learning material or different pictures maps globes newspaper jodi contemporary issues achi collection from the different newspaper magazine movie internet or we can use the different chart pictures all these things we can use for the teaching the political science concepts. Okay, so these are called as that important TLM for teaching political science. Next time jiba geography विषय discussion करिवा unit 8 होची तमर regarding the teaching learning process in geography. तो सेमती फास्ट हमें डिस्कशन करिवा व्हाट इज नेचर ऑफ जियोग्राफी पीपीटी देखा जाउची यस मैम। कौन कहू तुम व्हाट इज द नेचर ऑफ जियोग्राफी मु तीनटा जिंस इंपोर्टेंट भाबिली एटा मु तुमको एटा मेंशन करिची इट स्टडीज द फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ओवर द अर्थ सरफेस इट डील्स विथ रीजन इट डील्स विथ प्रॉब्लम एंड इश्यूज फेस्ड बाय द अर्थ। ओके, जियोग्राफी हमें जदि कहिबा जियोग्राफी इज ए सब्जेक्ट विथ नेचुरल फेनोमेना यस और नो all the geographical concepts are the natural things we cannot manipulate all those things as we know the economics or political science are the things or the concepts made by the human beings but we cannot tell the geographical concepts are the made by the human beings these all are the natural phenomena. Okay, so geography is the study regarding it is called as geography means study a science of the earth. Okay, where we are living to know much more about our planet, to know much more about the environment, to know much more about the vegetation and different region is called as the geography. Yes or no? Yes, ma'am. Or time to time amaro ei geographical area रे भी हमको कौन problem आसुची कौन issues आसुची और जो problem भी issues आसुची how we will face them all these comes under the geography and all these things also children must know about it at the school level. A geography कौन geographical issues कौन geography रो different physical region कौन
how as a human being we will lead our life in this earth surface. All these things children must know, and that's why geography plays a very important role, plays a very important subject in social science. That's why it got its importance in the school curriculum till the end of the secondary education. Not only that, in the higher also, geography has, as a subject, has its own status. खाली जे स्कूल रे पिला माने ज्योग्राफी पढुचोंदी नै, ज्योग्राफी गोटे सब्जेक्ट हिसाब रे हायर एजुकेशन रे मध्ये तार ओन स्टेटस अछि. आमे जदि हायर एजुकेशन रे भी चाहिमा, आमे ज्योग्राफी गोटे ऑनर्स नै कि हो किमा ज्योग्राफी विषय रे आमे हायर स्टडीज भी करि परिबा. ओके, so geography as a subject has its own status and as a discipline has its own importance. Jadi scope of geography कहिबा, geography under रे कोन आसीबो, then we can say that it is limit, it has no limit. What will come under geography? It has no limit. Okay, it has the physical geography, human geography, biogeography, regional geography, biodiversity, environment, sustainable development. These all will come under the scope of geography. It is a very vast subject and we cannot make it limit. Okay, so nature of geography re bhi ame kahi pariba, it is very comprehensive in nature. Like history, as we discussed, it is very comprehensive nature. Like this, geography is also very comprehensive in nature. And also it is continuous in nature also, because study of geography is also according to time there is always change in geography. Okay, climatic change in the vegetation, change in the region, change in way of living of the individuals. Every moment there is the changes. So we can say the nature of geography is also comprehensive and continuous in nature. Okay? And scope of geography is limitless. It has no boundary. बुझी पारल कोन कहली एबे नेचर और स्कोप रे नाही आउ तमे जदी किछ ऐड करिया को चाहू को हम आउ कोन ऐड करि परिबा अरे सुनुचो ना अच्छो ना नहीं समझते यस मैम सुनुचो ना मु भाबिले आजी कोन खेल चलछि तो खेल देखुचो ना क्लास अटेंड करूचो नो मैम सुनुचो तो क्लास रे कोन कोन अबे डिस्कशन करले हमें मैम स्कोप ऑफ ज्योग्राफी अच्छा स्कोप ऑफ ज्योग्राफी रे पीपीटी देखा जाउछि कोन मेंशन करछि यस मैम देखा जाऊ पीपीटी देखा जाउछि तो यस ना मैम मैम हां को देखा जाउछि मैम फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी बायोज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी एबे देखा जाउछि मैम ओके आर बियॉन्ड रे आउ किछ हमें ऐड करि परिबे केठी physical geography means regarding the geographical physical aspects of the earth is going to cover under the physical geography. Human geography regarding the human society, okay, how the human beings are living in the different parts of the earth, in the way of living, their vegetation and all those things. Biogeography, it means not only the human beings, all the biodiversity, it will come. Regional geography, आउ आ अंडर आउ किछि मेंशन करि परिबा कि अंडर द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी मैम नेचुरल ज्योग्राफी ज्योग्राफी इटसेल्फ इज नेचुरल आई थिंक यू आर टॉकिंग रिगार्डिंग जोटा कि तमे नेचुरल ज्योग्राफी करछो दैट इज कॉल्ड एज द बायोज्योग्राफी यस आउ किछि तमरा ऐड करिवार अछि ना हम आगु को जेबा डिस्कशन करिबा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी काहे कि हमें ज्योग्राफी स्कूल लेवल रे हम पिला मानन को पढेबा दरकार को तमे निजे को ए पॉइंट उडा को छाडी कि तमे आउ किछि कते मते को काहे कि ज्योग्राफी पिला मानन को पढेबा दरकार व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी यदि ज्योग्राफी पढा न जीवो ताले व्हाट द प्रॉब्लम्स दे विल फेस मैम निजर एड्रेस जानिबा पई भी ज्योग्राफी आवश्यक कि जदि जने रहउची कोठी तार एड्रेस से कहबा पई ज्योग्राफी तो दरकार
Yes. जोठी आमे रहुचे प्रथमे जो आमे प्लानेट आमे अर्थ रे रहुचे आमे अर्थ विषय तो जानिया दरकार जदि आमे एठी रहुचे व्हाट आर द थिंग्स आर देयर व्हाट आर द एलिमेंट्स आर देयर वेयर वी आर लिविंग what are the things are there in our surroundings how we can lead our life in this planet okay so each and every concept regarding the science is also comes under geography okay ଯେମିତି different scientific issues scientific contents also comes under the geography and every individual must have idea regarding the geography otherwise we cannot lead our life in this planet okay आमे प्रथमे जानिया दरकार जे हमको लाइफ लीड करिया पे कोन कोन दरकार सेही सब जिनिस हम प्लानेट रे केमिति अवेलेबल अछि आमे तार बेस्ट यूटिलाइज केमिति करि परिबा हाउ वी कैन लीड द life a balanced life and how we all can live in this planet happily all these things must have idea regarding that otherwise we cannot lead the life हैला तो सेहिथि पई जियोग्राफिकल नॉलेज सबु पिलांकर रहिबा आवश्यक आ से माने भल से बुझीबा दरकार हैला हमर क्लाइमेट कोन हमर एनवायरनमेंट कोन लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कोन कोन नॉन लिविंग थिंग्स कोन कोन अछि how we can take the use of the living organisms non living organisms to lead our life how we can make the balance of all those things what are the resources are available what is the resources we can make the best use that so that it cannot be it can be recreate okay so all these things the children must know so for that purpose teaching of geography is must essential at the school level and we are going to teach geography to our children in social science and in social studies in their total school curriculum यदि हमें देखिए प्रथम क्लास टू आरंभ करिए दशम क्लास पर्यंत हमर डिफरेंट जियोग्राफिकल कांसेप्ट को हमें डिफरेंट वे रे हम पिला मानन को अवेयर करोचे आ पढौचे हमें कहबा प्रथम क्लास टू अछि हमर जियोग्राफी विषय रे छोटो पिला को भी पढ़ा जाए यस मैम छोटो पिला को भी पानी पानी कोन पानी केमिति हमें सेव करबा दरकार पानी हमरो एयर कोन हमें केमिति ताकू केमिति व्यवहार करिया दरकार ए सब देखियो हम राइम्स माध्यम रे हो किबा हमरो डिफरेंट वैल्यू एजुकेशन माध्यम रे भी हो हमें जियोग्राफी हमें पिला मानन को पढौची सेंते हायर क्लास को आसला परे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म क्लाइमेट केते प्रकार वेजिटेशन अछि केते प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने अछंती व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हाउ वी कैन मेक द बैलेंस in these of the biodiversity all these things we are going to teach in the total 10 years of the school curriculum है ना तो मेन ऑब्जेक्टिव होची जे हमर पिला माने किंजे डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड और पीपल विषय रे बुझंतु से माने डिफरेंट इकोनॉमिक और सोशल चेंज विषय रे अवेयर हुंतु एवं से माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हमर जेति के अवेलेबल अछि रिसोर्स how they can make the best use of it okay and how they can grow by taking the best use of the resources ए सब होच हमर मुख्य उद्देश्य हमें पिला जियोग्राफी पढेबा पाई so different method गुडा जेमति विषय रे हमें डिस्कशन करले हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से सेमिति different methods to teach geography main important method होची questioning peer learning sorry एटे मो गोटे ई मिसिंग अछि peer हे जाछि PEE है peer learning games role play problem solving and decision making experiential learning field visits these are the mostly methods we use to teach geography mostly हमें कहू जे हमें demonstration method भी use करि परिबा to teach geography indirect observation cum discussion जोटा कि हमें कहू is the best method to teach geography at school level कोन बुझुछ त माने indirect observation माने कि कहबो what is indirect observation demonstration is also a method सब मेथड गुडा तो मेंशन करनी जोटा इंपोर्टेंट गुडा को मेंशन करी छी किंतु डेमोन्स्ट्रेशन indirect observation cum discussion these all are the good methods to teach geography at secondary इनडायरेक्ट मैम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहिले हमें पिला मानन को ऑब्जर्व करूथिबा से माने जानि पारु नथिबे अरे नहीं तमे उल्टा बुझीछो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रो अर्थ होची आउ के कहिबो मैडम मु आउची इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होची
जोड़ा हमें पिला विषय डाटा नवा तार कि माने फ्रेंड पाखरु कि गार्डियन मान पाखरु ନାଇଁ 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 ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିବାର ସ୍କୋପ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନେକର ସପୋଜ ଦେଖ ଆମେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପଢଉଛେ, ପୋଲାର ରିଜନ ବିଷୟରେ ପଢଉଛେ, ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଲାର ରିଜନ କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବାନି, ଯାଇପାରିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ मैडम ଆମେ ଯଦି ଯିଏ ସିନା ସେ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ସିଏ ସିନା ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଭେଜିଟେସନ मॉडल କଣ देखि परबा मॉडल इनडायरेक्टली देखि परबा ଆମେ ସେ ରିଲେଟେड ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିडिଓ କ୍ଲିପ ଦେଖେଇ କିଛି ପାରିବା। ମଡେଲ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଦେଖେଇକି ଆମର ଆଇସିଟି, ହଁ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଦେଖେଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ସେବେଠେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ପାରିବା, କିଛି ମଡେଲ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତ ସେଇଟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ କଲେନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ କଲେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ ଇଟ ୱିଲ ବି ଫଲୋଡ ବାଇ ଡିସ୍କସନ ବାଇ ଦ टीचर। ପିଲାମାନେ क्वेश्चन ପଚାରିବେ କିମ୍ବା टीचर क्वेश्चन पचारिबे and the discussion will follow. That is called as the indirect observation cum discussion method. माने एटी दीटा मेथड को हमें यूज कले, गोटे होची इनडायरेक्टली से माने ऑब्जर्व कले, आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय डिस्कशन। हैला, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन। है ना, जेते जियोग्राफिकल कांसेप्ट्स माने मते अर्थक्वेक विषय रे पढेबार अछि, मु अर्थक्वेक एरिया को जे नेकी पिला को पढेबी कोडी अर्थक्वेक इट्स नॉट पॉसिबल। सो अर्थक्वेक हेले केमिति लाइफ कोन हुए, केमिति प्रकार कंडीशन हुए, काहे के अर्थक्वेक हुए, तार कारण कोन, तार ड्रॉ करके तार ड्राइंग नेकी किंबा तार डिवास्टेशन रो किछि पिक्चर देखेकी आमे कोन करबा अर्थक्वेक विषय रे पिला को पढाई परबा। देन दे कैन ऑब्जर्व इट इनडायरेक्टली। अंडरस्टैंड? दैट इज कॉल्ड Yes, एज ma'am. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। बुझि पारलो समस्ते? सेमिति डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन माने कोन बुझुचो? मैम पीपीटी शो करनानी। अरे कौन असुविधा होची रे, काली तो भल देखा जाउतला, आज मु बारंबार शेयर करूची। ओके वेट, अगेन आई हैव टू शेयर, वेट। काली देखा जाउतले ना? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ मैम एबे होला? Yes, ma'am. ଦେଖାହେଲା। Yes, ma'am. अच्छा, ओके। सो डेमोन्स्ट्रेशन रो अर्थ होची जेते केते जियोग्राफिकल कांसेप्ट्स अछि जार एटा मोस्टली साइंटिफिक मेथड, साइंस पढेला बेले हमें मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करू, बट देयर आर डिफरेंट जियोग्राफिकल कांसेप्ट्स जार डेमोन्स्ट्रेशन हमें क्लास रे करि परिबा। हैला, जार डेमोन्स्ट्रेशन करिबा, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करिवे एंड इट विल बी फॉलोड बाय द डिस्कशन। डेमोन्स्ट्रेशन कला बेले पिला माने ऑब्जर्व करिवे, तापरे पिला माने सहित टीचर डिस्कशन करिवे बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। देन इट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड। गोटे एग्जांपल गोटे टॉपिक कहलो कोडा हमें डेमोन्स्ट्रेशन प्लस डिस्कशन मेथड रे पढाई परिबा पिला मानको जियोग्राफी टॉपिक। मने को एवोपोरेशन विषय रे हम पढौछे, करि परिबा हमें क्लास रे पढाई परिबा, किमा मो रोटेशन रिवोल्यूशन विषय रे पढौछे हमें पढाई परिबा, ताको गोटे डेमोन्स्ट्रेट करि परिबा क्लास रे। यस मैम। आउ एसिड Yes, बेस ma'am. रो माने जानिबा पे इंडिकेटर यूज करके भी सेटा यस, जानिबा। ओके, सेटा को जे कोनोसी गोटे कांसेप्ट रो क्लास रे हमें एज ए टीचर हमें डेमोन्स्ट्रेट करिबा, हैला, सेते बेले पिला माने ऑब्जर्व करिवे। आफ्टर दैट वी विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस and that questions will be followed by the discussions. Okay, so these are the mostly methods we are using for teaching geography at secondary level. हैला, जेमती क्वेश्चनिंग, खाली प्योर लर्निंग माने बुझुचो कोन? पिला माने को Yes. ग्रुप करके टॉपिक दबा, से माने तांको भीतर निज ओन डिस्कशन करिवे, हैला, से माने सांग मान को सिखिबा। हमें जानि छे प्योर लर्निंग इज अ बेस्ट मेथड आल्सो एट द सेकेंडरी लेवल। काहे कि ना पिला माने टीचर को जेते शीघ्र सिखि परिबेनी, तांको सांग माने जदि तांको बुझेइबे देन दे विल लर्न इजीली। हैला, जो जिंसटा हमको टीचर बुझेले बुझु नताए, किंतु जले सांग सहज रे बुझेइ देले हमको सांग सांग बुझि जाए। ठीक कथा कि नुह? यस मैम। Yes, so that's why pure learning is also can be used as a method to teach at the secondary level, to teach geography. है ना, सेमती विभिन्न प्रकार गेम कंडक्ट करिकी
रोल प्ले करिकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग जेतेबेले हमर गोटे किछि इश्यूज अछि ताकू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे भी हमें ज्योग्राफी पढ़ाई परिबा जेमते हमें देखुचे पॉल्यूशन इज ए इश्यू એટલે डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन आमे जाउछ सेही इश्यू गुडा को हमें कोन करिया प्रॉब्लम सॉल्विंग जदि एमिति होउची ताहले हमर कोन पिल्लांक भितरे से प्रॉब्लम को दबा ताकू बेस करके डिस्कशन रे फॉलो करिबा और प्रॉब्लम सॉल्विंग रे स्टेप्स गुडा को फॉलो करिबा हैला तापे कोन कोन तमे एनालाइज करो प्रॉब्लम को कोन हेई पारे व्हाई व्हाट इज द रीजन फाइंड आउट द कॉज तार 6-7टा जो स्टेप अछि ताकू फॉलो करिके आमे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे मध्ये आमे पढाई परिबा सेमति एक्सपीरियंशियल लर्निंग होची कोन ना से माने निजर ओन एक्सपीरियंस रु से माने करे जे कोनोसी जिंस गुडा आमे करिया चाहजे वी विल प्रोवाइड दैट एक्सपीरियंस टू आवर चिल्ड्रन हैला if they will experience after that they will learn okay this is also called as a student centered learning or a constructivist approach learning method मैम गोटे क्वेश्चन थिला एक्चुअली गोटे बेबी माने नियारे ता हातडा बाजी गला तापरे नेक्स्ट टाइम से सेटा को टच करबा पई फियर कला तो ए जो प्रोसेस रे एटा एक्सपेरिमेंटेशन ना एक्सपीरियंस कोथरे से एटा सिखिला कि experiential learning experiment नुह दिस इज कॉल्ड कि एक्सपेरिमेंट करिया पे जानि कि हाथ रे नियाटा लगाएनी कि मैं हमें टीचर हे कि जे कहि परिबेनी हम चलो बे एक्सपेरिमेंट करिबा हबनी किंतु सो माने ऑटोमेटिकली फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी लर्न एक्सपीरियंशियल लर्निंग होची एक्सपीरियंस रु से माने जोडा सिखंदी दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग बट आर्टिफिशियल वी कैन प्रोवाइड ए सिचुएशन टू क्रिएट द एक्सपीरियंस ओके मैम okay so these are the mostly methods we follow to teach geography hela next मैम मोर गोटे डाउट हाउ टू टीच रोल प्ले ए जो रोल प्ले जोटा अछि हमें केमिति सेटा ज्योग्राफी रे हमें सेटा यूज करि परिबा हां रोल प्ले हमें करू मोस्टली छोटो पिल्ला को पढाइला बेला हमें रोल प्ले मेथड करू एलिमेंटरी स्टेज रे जेमति देखो डिफोरेस्टेशन रो गोटे रोल प्ले हमें करि परिबा गच्छ काटिबा द्वारा हमर कोन क्षति होउची गच्छ काटिबा द्वारा हमर कोन देखिथिबो विभिन्न प्रकार गोटे पिल्ला गच्छ होई कि ठिया आइथिबो तार हाथ काटि देबे तापर हला पे वर्षा होउनी केमिति होउची हम तार रोल प्ले करूची गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल दे विल प्ले द रोल okay deforestation is a topic in geography by playing the role we can teach what is deforestation and what the problems will arise if there is a deforestation हैला ओके सेमति विभिन्न प्रकार टॉपिक अछि but one thing you remember as a teacher you must know that which method is suitable for which content सबु कंटेंट को सबु मेथड सुइटेबल नुह हैला मु रोल प्ले मेथड मु जो सबु टॉपिक को मु रोल प्ले रे पढी देबी कहले हबो नै आम्मा एज ए टीचर वी मस्ट जुडिशियली डिसाइड वी मस्ट टेक द डिसीजन which method will be a appropriate method to teach a particular content okay सबु मेथड भलो सबु मेथड रो किछि मेरिट्स अछि किछि डिमेरिट्स अछि but as a teacher you must know that which method is a suitable method for teaching a particular content किंतु सबु कंटेंट को सबु मेथड रे पढा जाई परिबो नै yes यस मैम मैम पर लर्निंग बुझी एग्जांपल टिके पर लर्निंग रे देबे ना सेटा कहली पर प्योर लर्निंग सेटा भूल हे जाईची गोटे ई छाडी जाईची मोर टाइप मिस्टेक हे जाईची PEER प्योर लर्निंग माने सांग मानक द्वारा पेयर करिक जेते बेले प्योर माने बुझुचो सांग दी जन को हमें पेयर करिकी हमें लर्निंग करेबा हमें क्लास रे जति की पिला छथि तांको हमें ग्रुप करिबा मान दीटा पिला को गोटे गोटे पेयर करिबा से माने तांको भितरे डिस्कशन करिवे टॉपिक से माने डिसाइड करिवे कि को टॉपिक रे से माने कोन डिस्कशन करछथि एज ए टीचर वी विल ऑब्जर्व एंड व्हेनेवर दे विल आस्क द डाउट्स वी विल सप्लीमेंट देम ना सेटा को हमें प्योर लर्निंग बोली कहू ओके बुझी परला थरा जे पचारुथिलो आज्ञा मैम एबे पीपीटी देखा जाउची नो मैम No, ma'am. आउ थरे देखा गलानी किछि भी देखा जाउनी नो मैम नो No, मैम ma'am. एबे देखा गला यस Yes, ma'am. यस मैम okay now we will discuss what are the teaching learning resources are there in geography we can use hala
जेमती हम अलग सब्जेक्ट रे भी डिस्कशन कले टेक्स्ट बुक इटसेल्फ इज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू टीच ज्योग्राफी लाइक एटलास मैप ग्लोब पिक्चर्स न्यूज़पेपर periodicals aerial photographs audio video clips CDs multimedia internet so these are the different resources we can take the use of all those things at the time of teaching geography to supplement ହେଲା ଆମେ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करिवार मुख्य उद्देश्य कोन जे टू मेक द चिल्ड्रन्स अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कंटेंट जोटा को आमे भाषा रे जेते एक्सप्लेन कले भी यदि पिला बुझी पारु नाहंती ताहले आमे गोटे जिंसर सहाय्य नै कि तांकर अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेवा होची टीचिंग लर्निंग यूज करिवार मुख्य उद्देश्य तो आमे ज्योग्राफी पढेला बेले मुख्यतः आमे मैप और ग्लोब यूज करिवा निहाती दरकार बिकॉज मैप रीडिंग और ग्लोब रीडिंग विषय रे पिला मानकर प्रॉपर नॉलेज रहिबा निहाती दरकार ओके so as a geography teacher we should not forget that we must take the use of map and globe at the time of teaching geography सेमिति आमे विभिन्न प्रकार ग्राफ रो यूज करि परिबा जेमति बार डायग्राम पाई डायग्राम किबा लाइन ग्राफ जे कोनोसी जेतेबेले आमे डाटा गुडा को प्रेजेंट करूचे सेतेबेले आमे ए सब रो यूज करिया को चाहिमा किबा आजिकली देखिबो त माने स्मार्ट क्लास जोडा आमे कहूचे सेतिरे विभिन्न प्रकार geographical concept ro video clips or audio clips available achi okay if those things are available we can take the use of all those things for the clear understanding kaina se mane directly देखिबे जेतला हम गोटे वेजिटेशन कथा कहूचे आमे जेते एक्सप्लेन कले भी पिला माने सेटा abstractly से माने भाबी परिबेनी से विषय रे so if we will give the माने show the video to them then definitely they will understand it and it will give a clear understanding सेमान को visualization मनकर clear visualization भी हेई परिबो okay so these are the mostly nowadays teaching learning material is not a problem because we know now we have the internet we can search everything and we can get the video and audio and those things we can take the use of it at the time of the teaching geography ठीक अछि नेक्स्ट हमर आ बाकी रहिला गोटे जिनिस जोटा कि हमर रहिला यूनिट 9 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स माने कोन बुझुचो व्हाट इज इकोनॉमिक्स जेम हम डिस्कशन कले हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस व्हाट इज इकोनॉमिक्स माने अर्थ कोन बुझुचो दिस इज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस काले हम ए विषय ऑलरेडी डिस्कशन करि सच्चे तो तमे इकोनॉमिक्स माने कोन बुझुचो की कहिबो मैडम इकोनॉमिक्स होची अर्थनीति जोटा गोटे देशर आर्थिक स्थिति विषय जानिबा तार डेवलपमेंट रे कोन रहउची कारण बा कोटे देश गोटे अग्रगति करिने कि अनुन्नत अछि ता पछरे कोन कारण रहिछि से विषय स्टडी हम अच्छा एमिति किछि जिंस गोटे टर्म गोटे गोटे वर्ड अछि जेमति कि सर्वाइव करिया खाली पई किछि गोटे एक्सचेंज करिबा जोटे कि पन्य द्रव्य भितर द्रव्य एक्सचेंज करिकि बंचिबा किंबा मनी करेंसी ए जो सब गोटे गोटे टर्म से जो जेतला जे हम यूज प्रथमे करंती कहले खाली देशर अर्थनीति अछि हम निजर अर्थनीति नाही हाँ मैम निश्चित भाव आम निजर अच्छी गोटे माने पर्सनाल जोटा डेवलपमेंट आम कहउछंदी यस अर्थ इकोनॉमिक्स रो तो ओडिया टर्म ता हला अर्थनीति सेटा तो तार आज्ञा मीनिंग नो हां ओडिया आज्ञा टर्म ता हला अर्थनीति କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଅର୍ଥ କଣ ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ମ୍ୟାଡାମ ଟଙ୍କା ବା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ यस अर्थ माने बुझुचो पैसा नीति माने नियम rules and regulations how we will deal with science of money okay economics nothing else it taught to us regarding the science of money okay how we can create money how we will deal with money okay so this is all related regarding the money okay science of money and as we know that to lead the life also money plays a very important role we cannot lead our life without money money is not everything money is not life but to lead the life money is essential तमे समस्त एथिरे राजी कि नुह Yes, ma'am.
Yes. पैसा So बिना किछि भी हो yes, definitely. But money is not life. We cannot tell that the reverse is not correct. If money is there, there is life. We cannot tell like that. Money is not everything, but without money also life is not there. Okay, we have to earn money, and we must know how to deal with money. We must know the science of money. Otherwise, we cannot lead our life also in this society. Okay, so economics is a very important subject also in social science. That's why it got its place in the school curriculum. Economics subject ago gote nua subject, eta bahut puruna subject no. Before it was the part of political science. Eta gote political science ro part ହେଇକିଥିଲା. 19th century re economics got its status as a new subject. Okay, but economics nowadays is a very important subject. Every child must have some economic attitude, otherwise also it is very difficult to lead the life in the society. प्रत्येक पिला माने इकोनॉमिक्स विषय तांकर आइडिया रहिबा दरकार, मनी विषय तांकर आइडिया रहिबा दरकार, आ गोटे इकोनॉमिक एटीट्यूड अछि बहुत माने छोट बेलुरु आमे मनी कोन केमिति मनी को डील करबा दरकार, केमिति मनी को नै कि आमे लाइफ लीड करि परबा. Those all the principles also must be taught to our children so that they can lead their life in the future. Okay, so that's why economics is included in the school curriculum mostly at the secondary stage in 9th and 10th. Up to 8th class देखिबो economics विषय किछि नथाय, किंतु 9th 10th रे जेतले आमे secondary stage कहूचे सेते बेले हमर economics विषय अछि. And now it is focused that more importance must be given. आउरी किछि नुवा नुवा जिंसो हमर economics related school curriculum रे ऐड होबा निहाती दरकार, जोड़ा कि पिला माने आज पर्यंत बुझी पारंतिनी. ओके, हमको भी जदि वर्तमान पिला माने पचारियो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ द educated persons also unable to express what is economics. But we know that every moment we are dealing with certain principles of economics. प्रति मुहूर्त रे हम लाइफ रे हम certain economic principle को यूज करके हम लाइफ हमें लीड करूचे. But those things in a particular format, मैम in a पीपीटी शो name. करूनी. Oh no. आज कोन नेटवर्क प्रॉब्लम रहउची. एबे सोकला. यस मैम Yes, ma'am. Yes. So nature of economics mane kono? It is the study of the human behavior. Nothing else. Economics is study of human behavior related to money and financial matters, financial transactions, financial issues. Okay. So we can say the nature of economics is the study of human behavior related to money. It's based on generalization. Okay. And it is interdisciplinary. And change is according to the time. There is always change in the field of economics. Okay. So these are the mostly the nature of the economics. Then we will come to the scope of economics. What will come under economics? What we are going to read. कि इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स अच्छा माने तमे भलो भाबे जानि परथिबो इकोनॉमिक्स से मोस्टली कोन कोन हमकु को विषय रे हमकु पढिया पड़े कि अच्छा इकोनॉमिक्स स्टूडेंट एते ना कि भी पढिनो इकोनॉमिक्स केबे तमरो +2 लेवल की +3 लेवल रे. यस मैम थिला पढिचो ताले ए पेपर गुडा निश्चय पढिथिबो. देखो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जहां हमें कहउचबे तो इकोनॉमिक्स अंडर रे कोन आसे जेमति माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल इकोनॉमिक्स जोटा को हमें कहू पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड. एबे मैम सब भूली जाइछु मन भूली नहीं हो जाइछु किछि आउ किछि भी मने नहीं. Okay, so these are the mainly important concepts. Children must have idea about all these things. What is microeconomics? जेमति जणाबे कहले इकोनॉमिक्स माने होची we must know about economic of country. But every individual has some economic behavior. हमर भी गोटे इकोनॉमिक बिहेवियर अछि. प्रत्येक छोट पिलार भी गोटे इकोनॉमिक बिहेवियर अछि. तमे गोटे पिला को गोटे 10 टंका दियो ताको भाबियो खर्च करिया कहबो. Every child will spend it differently. तमे पचारियो तमे केमिटा खर्च करियो. Every child has its own plan. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So that is the economic behavior. हमको जदि सेम टंका दिया जाए खर्च करिया कहया जाए, we have the different plan.
how you will spend it. So that is called as the economic behavior. प्रत्येक लोकंकर आमर आमे केते इनकम करूचे केते खर्च करिवा जहा खर्च करिया केमिति खर्च करिवा ओके जदि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू जेते आमे एटा डिस्कशन करू देन इट इज कॉल्ड एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स किंतु जेते आमे इकोनॉमिक्स ऑफ ए कंट्री कथा कहू स्टेट कथा कहू देन इट इज कॉल्ड एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स हैला सेमति प्रत्येक गवर्नमेंट रो भी गोटे इकोनॉमिक पॉलिसी अछि यदि सेगुडी को विषय आमर जो आमे जहा पढू ताको आमे कहू फिस्कल पॉलिसी जमती गवर्नमेंट रो इनकम केते एक्सपेंडिचर केते तांकर बैलेंस ऑफ पेमेंट केते डेफिसिट अछि ना सरप्लस अछि हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स दोज ऑल द थिंग्स विल कम अंडर द फिस्कल इकोनॉमिक्स like developmental economics what are the welfare programs government is going to start for the economic development से जिनस गुडा को जो थरे हमें पढू ताको कहू हमें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स सेमती इंटरनेशनल ट्रेड माने बुझुथिबो how we do the imports and exports amara kon production adhika hochi how we will export all those things to the foreign countries and what required for us it's not available in our country how we are going to import all those things from other country what is the trading rules are there regarding trade what are the international level re kon niyam achi a kon kete prakar tax achi ko se tax guda ko kon se bisare sabu janiba jaha ami seta ko international trade सेमती बैंकिंग कौन बैंक सिस्टम कौन बैंक रो फंक्शन कौन को सुविधा बैंक रो लोक माने पाई परंती से जो रिलेटेड एवरीथिंग विल कम अंडर द मनी बैंकिंग सेमती मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अछि अप्लाइड इकोनॉमिक्स अछि सो दीज आर द डिफरेंट स्कोप माने एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स एवरी चाइल्ड हैव आइडिया अबाउट इट बट किंतु आमे जदी देखिबा वर्तमान ए सबु रिलेटेड रो हमरो इकोनॉमिक्स रो कंटेंट हमरो स्कूल रे पिला मानकु पढा जाउ नाही बट in these all the topics must be included at the school level only because if every child must have idea about all those things then only it will be help them to live a good economic life in the future so these are the scope of economics then we will come to discuss regarding the aims and objectives of teaching economics वो कहीं इकोनॉमिक्स हमें पढ़ो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कहबा जे टू डेवलप ए इकोनॉमिक एटीट्यूड हैला to understand the different economic concept जेमति मु कहली हमरो बहुत माने लोक मान को डिफरेंट इकोनॉमिक कांसेप्ट विषय आइडिया न थाए हैला इकोनॉमिक एटीट्यूड डेवलप करिवा समान को विभिन्न इकोनॉमिक कांसेप्ट ऊपर अवेयर करेवा हैला इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोन जानिमा हां आ इकोनॉमिक्स पढिले भी पिला मानकर एनालिटिक स्किल बढ़े डेवलप हुए आ समान अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़े समान विभिन्न प्रकार पॉलिसी इश्यूज गवर्नमेंट विषय जानि पारंती so ए सब होची हमरो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स टू आवर स्टूडेंट एट सेकेंडरी स्टेज कार किछि डाउट अछि एते एबे पीपीटी देखा जाउची तो यस मैम देखा जाउची देखो एथु तमे देखि कि मते को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स रे कोडा बुझी पारुनो कि ताले हमें से विषय अधिका टिके डिस्कशन करिया पढो पीपीटी टा पढो जदी किछि बुझी पारुनो ताले मते को then we will discuss more about that particular point मैम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स टिके कहिले माइक्रो इकोनॉमिक्स रो अर्थ होची एक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू गोटे पर्टिकुलर लोकर इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर इकोनॉमिक बिहेवियर ऊपर हमें जहा पढू दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो रो अर्थ बुझुचो कोन स्मॉल मैक्रो रो अर्थ बुझुचो लार्ज किंतु जेतेबेले गोटे कंट्री रो गोटे स्टेट रो इकोनॉमिक पॉलिसी विषय हमें सब पढू दैट विल कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स हैला एटा होची दीटा पेपर इकोनॉमिक्स रो दीटा पेपर रो ना हैला यस मैम आउ के कोन कहतिलो को टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स सेटा टिके to develop माने इकोनॉमिक्स होची कोन मोस्टली दैट एज ए सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हैला जोथरे की कैलकुलेशन थाए जोथरे की किछि कांसेप्ट रो बुझीबार थाए ताको एनालाइज करिवार थाए तो सेति पे हम जेमति मैथ पढले जेमति हमर एनालिटिक स्किल रो डेवलप हुए इकोनॉमिक्स पढले मध्ये सेमति एनालिटिक स्किल रो पिला मानकर डेवलपमेंट हबो एनालिसिस रो अर्थ बुझी परछो गोटे जिंसटा को तर्जमा करिवा हैला से एबिलिटी रे पिला मानकर डेवलप हो इकोनॉमिक्स पढेइले पिला मानकर ए एनालिटिक स्किल मध्ये डेवलप हो मैम टू डेवलप इकोनॉमिक एटीट्यूड
attitude अर्थ माने बुझुछ attitude इज ए साइकोलॉजिकल टर्म attitude टा होछ उठे कोन साइकोलॉजिकल टर्म हैला इकोनॉमिक attitude माने they must know the use of the money माने इकोनॉमिक आमे जते बेले कहू जे आमे attitude अर्थ होते कोन कहबे गोटे आमे जेमति गोटे पर्टिकुलर व्हाट इज योर एटीट्यूड रिगार्डिंग द सोसाइटी तमे एठी कोन बुझुछ एटीट्यूड रिगार्डिंग द सोसाइटी एटीट्यूड अर्थ एटीट्यूड वर्ड तार अर्थ बुझुछ एटीट्यूड माने कोन मनोवृत्ति हां मनोवृत्ति अर्थ माने तमे ओडियाटा कहि दोछ खाली अर्थ तो ता नो एटीट्यूड ओडिया टर्म ता होची मनोवृत्ति हैला सेमिति इकोनॉमिक्स रे तमरो मनोवृत्ति कोन माने जेमिति हमरो विभिन्न लोकंकर इकोनॉमिक्स रिलेटेड एटीट्यूड डेवलप होबो जदि तमे इकोनॉमिक रे कांसेप्ट गुडा को हमें बुझिबा ताहले हमर डिफरेंट इकोनॉमिक एटीट्यूड ता डेवलप हो अदरवाइज वी विल अनअवेयर अबाउट इट हैला तो सेति पे इकोनॉमिक कांसेप्ट गुडा को विषय रे अवेयर हेले हमर इकोनॉमिक एटीट्यूड डेवलप हो मैम जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स कोन आ और फिजिकल इकोनॉमिक्स कोन के कोई अप्लाइड इकोनॉमिक्स माने जो इकोनॉमिक्स रो अप्लाइड माने एबे जानछो सब जिंस रो अप्लाइड आसुची जेमति हमें कहूचे जे फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स हैला सेमिति इकोनॉमिक्स रो जो अप्लाइड लेवल जिंस गुडा को जोडा रे जो पेपर रे आसे ताको हमें कहू अप्लाइड गोटे पेपर रो ना जेमति इकोनॉमिक्स रो गोटे पेपर रो ना अप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज ए जोडी मैथमेटिकल एप्लीकेशन बेसी थाए ताको कहू हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स economics and mathematics are also mostly related to each other mostly हमें mathematical concept गुडा को economics रे यूज करू किंतु से जो गोटे एडा भी गोटे पेपर रो ना जेमति जो कांसेप्ट हमर मैथमेटिकल जिंस को बहुत यूज करा जाए सेटा को हमें कहू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स भी हमें कहू से पेपर रो ना होची इकोनोमेट्रिक मैम फिजिकल इकोनॉमी होची जोटा कि गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी गुडा को विषय रे गवर्नमेंट रो इनकम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रो बजेट कोन ए सब विषय रे जते बेला हमर जो टॉपिक आसे ताको हमें कहू फिजिकल इकोनॉमिक्स बुझ परलो यस मैम ओके आ कुछ डाउट to make them understand the economic last day ma'am to make them main objective of teaching economics is that to make them understand the economic policies and issues economy रो जो policy एबे मन कर देखो demonetization is a economic issue काहे की गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन कला डिमोनेटाइजेशन बुझी परछो जानि छ डिमोनेटाइजेशन कोन जो हमर 1000 टंका 500 टंका बंद करा हे गेला जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कला जे आ 1000 टंका 500 टंका चलिबो नाही को मसिया रे हितला 2016 जदि 16 मसिया जो डिमोनेटाइजेशन हला that is the economic issue why the government has taken the decision of demonetization हला माने कर कहबे इन्फ्लेशन माने कोन बुझुछो इन्फ्लेशन कोन बुझुछो ना आगे लिखि लूंगा जब बोल अरे के म्यूट करो अनम्यूट अच्छो के म्यूट करो इन्फ्लेशन कोन बुझुछो जेते बेले हमर सप्लाई ऑफ मनी अधिका हे जीवो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज मार्केट रे कम हे जीवो देन द प्राइस राइजिंग ऑफ प्राइसेस विल बी देयर इन द इकोनॉमी सब जिंस रो रेट बढ़ी जीवो जदि सब लोगन को प्रचुर दरमा मिलिबो किंतु से अनुसार किछि मार्केट रे प्रोडक्शन होबनी ताहले कोन होबो जो जिंसटा को आज तमे 2 टंगा रे किनजो काल सेटा को तमे 200 टंगा रे किनिबो सो जदि ए प्रकार सिचुएशन अराइज होची दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन एंड इट ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट होची माने लोगन को पाखरे पैसा नै किंतु मार्केट रे जिंस अछि देन इट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन ओके सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स तो हमें जदि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स पढेबार अर्थ होची जे हमर पिला माने विभिन्न इकोनॉमिक इश्यू विषय रे जानिमे पॉलिसी विषय रे जानिमे हैला तो इकोनॉमिक्स रो टर्म गुडा को बहुत डिफिकल्ट हमें जेतु स्कूल रे भी हमर ए सब गुडा के पढा जायनी हमर एज ए कॉमन मैन हमें इकोनॉमिक्स इश्यू गुडा को बुझी पारु ना काहे कि होची कोन होची हमें बुझी पारु ना दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स मस्ट बी मोर एम्फसाइज्ड इन टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स मस्ट बी मोर एम्फसाइज्ड एट द स्कूल लेवल तो हमें इथरे एकमत कि नो हमें विषय पिला को अधिक पढेबा दरकार यस मैम
Yes, ma'am. यस आमे ज्योग्राफिकल इश्यूज बुझुचे आमे पॉलिटिकल इश्यूज बुझुचे किंतु पॉलिटिकल इश्यूज भी आमे बहुत पसरा आमे बहुत जिंस विषय अनेबे हमरो गोटे भल गोटे वेल एजुकेटेड पीपल मध्ये हमर कॉन्स्टिट्यूशन विषय को कहले कहि परिबेनी तो ए पॉलिटिकल इश्यू ज्योग्राफिकल इश्यू गुडा को आमे तो मोस्टली पढ़ा होची किंतु इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस को अधिक फोकस दवा दरकार वर्तमान सेकेंडरी स्टेज रे पिला मानको पढेबा दरकार हैला आमे बहुत जिंस विषय रे हमर पिला माने अनअवेयर आउ इकोनॉमिक्स बहुत कम कंटेंट हमर रहउची स्कूल लेवल रे जोटा कि आहुरी अधिका कंटेंट इन्वॉल्व होबा दरकार वही रे ओके नेक्स्ट आसीबा हमें मेथड्स इन इकोनॉमिक्स को मेथड हमें यूज करिकी हमें इकोनॉमिक्स पढ़े परिबा जेमिति जो अलगे सबु जो मेथड वर्तमान हमें डिस्कशन करथले प्राय सबु मेथड हमें यूज करि परिबा इकोनॉमिक्स पढ़ेया पई जेमिति कि लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड concept mapping method simulation games method projects method field visit data analysis and interpretation document analysis collaborative मु भाबुची जो लास्ट तीनटा मेथड को छाडिले आ बाकी सब गुडा कॉमन मेथड हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारली मैम सिमुलेशन गेम्स के बुझेबे सिमुलेशन गेम्स रो अर्थ होची सिमुलेशन होची जोटा कि हमें नै कि देखै परिबानी माने मास रे हमें सेटा को सिमुलेटेड कंडीशन रे क्लास रे एक्सपेरिमेंट करेबा देन इट इज कॉल्ड एज द सिमुलेशन गेम्स माने को देखो हमें मार्केट विषय रे पिला मानकु पढाया को चाहू हैना केते जिंस किमिति किनिमा किमिति बिकिबा किमिति लाभ केते क्षति हमें पूरा डायरेक्ट मार्केट को नेकी पढाई परिबानी हमें कोन करिया स्कूल रे गोटे मार्केट तयारी करबा एमती प्राय मोस्टली वे रे आजकल पढ़ा हमें पढ़ौचे पिला मानु हैना गोटे पिला हमें गोटे स्कूल रे गोटे जेमती साइंस एग्जीबिशन करूचे सेमिति गोटे इकोनॉमिक एग्जीबिशन गोटे करिबा सिमुलेटेड कंडीशन गोटे क्रिएट करिया को पिला माने माछ बिकिबे को पिला माने ग्रोसरी बिकिबे के वेजिटेबल्स बिकिबे अलगा पिला माने हाँ किनिबा मैम जिबे हुए तो से माने गणित जानि हाट गुटे बसे हेउची मैडम गणित मेला दैट इज गणित कॉल्ड हाट एज एमती होउची सिमुलेशन गेम हाँ गणित हाट जेमती सेमिति हमर हाँ हाट गणित विषय रे जिनिस किनिबा विषय रे सेमिति बैंकिंग इंटरेस्ट कोन हमें पिला को जानिना गोटे जने 100 टंका देइछि से ताकू इंटरेस्ट सहित केते टंका फेरेबो ताले मूल कोन सुध कोन ए सब जिनिस विषय करिया हम गोटे सिमुलेटेड कंडीशन स्कूल रे क्रिएट करबा गोटे गेम करिका गोटे सिमुलेटेड गेम करबा ताकू कहा जाय सिमुलेटेड गेम्स हला बुझि परला यस मैम अच्छा आउ कोडा बुझि परनो को मु भाबुची डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन डॉक्यूमेंट एनालिसिस आउ रहिला कोलैबोरेटिव ए तीनटा मेथड को छाडला बाकी सब मेथड हम डिस्कशन करि सारलेनी लेक्चर मेथड कोन यस मैम डिस्कशन मेथड कोन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कोन कांसेप्ट मैपिंग भी काली डिस्कशन करिछि कांसेप्ट मैपिंग कोन प्रोजेक्ट्स मेथड कोन फील्ड विजिट कोन खाली डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम एटा डिस्कशन करिनी हैला एटा मोस्टली इकोनॉमिक्स पई हमें यूज करू पढ़ेबा पई जोटा कि मु कहली विभिन्न प्रकार डाटा हमें कलेक्ट करबा मनकर हमें पॉपुलेशन विषय रे पढुचे पिला मान इकोनॉमिक्स रो गोटे टॉपिक रहला पॉपुलेशन हैला पॉपुलेशन ग्रोथ हमरो 2000 बे 20 रे पॉपुलेशन केते 10 रे केते थिला 2000 मसे हम जानिचे प्रति 10 वर्ष रे थरे हमरो जनगणना होउची पॉपुलेशन सेंसस होउची तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट केते परसेंट पॉपुलेशन बढ़ीची काहार पॉपुलेशन बढ़ीची मेल पॉपुलेशन बढ़ीची ना फीमेल पॉपुलेशन बढ़ीची पॉपुलेशन रे फिर भी हमें देखुचे जे हमर को एज ग्रुप रो लोकंकर संख्या बेसी बढ़ी जाईची हैला ओल्ड एज लोक बेसी अछंती ना हमर चिल्ड्रन बेसी अछंती ना मिडिल एज रो लोक अधिका अछंती एजुकेटेड लोकंकर संख्या बढ़ीची ना अनएजुकेटेड लोकंकर संख्या बढ़ीची हैला आ रिच लोकंकर संख्या बढ़ीची ना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अनुसार को ग्रुप रो लोकंकर बेसी पॉपुलेशन बढ़ीची हमें जेमती सब डाटा कलेक्ट करबा ताको एनालाइज करबा इंटरप्रेट करबा जदि ए वे रे हमें जदि किछि पढोचे दैट इज कॉल्ड एज द डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मेथड जोटा कि मोस्टली इकोनॉमिक कांसेप्ट को पढेला बेले हमें यूज करू हैला बुझि परला यस मैम हैला जो एमदी मु एटे जस्ट गोटे एग्जांपल देली पॉपुलेशन द सेमते हमें बैंकिंग विषय रे पढेला बेले भी बुझि परिबा जे हमर बैंक रेट केमिति बदलुची प्रति वर्ष हमर बैंक रेट बदलुची बैंक रेट केते प्रकार अकाउंट रे केते प्रकार हमर
ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଭିଂस ଅଛି, ସେଭିଂस ଆକାउंट ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାउंଟ ଅଛି, ସେଭିଂ ଆକାଉंଟ ଅଛି, ଆମର ରେକରିଂ डिपॉजिट ଆକାଉंଟ ଅଛି, फिक्स्ड डिपॉजिट ଆକାଉंଟ ଅଛି, କୋଉ ଆକାଉंଟ ରେ କେତେ इंटरेस्ट मिले सेगुडा विषय भी पिला माने जानिबा दरकार हैला। तो आमे ताकू एनालिसिस करिकी कोउथरे माने आमे टंका डिपॉजिट कले हमको अधिका लाभ मिलिबो, कोउथरो आमे अधिका बेनिफिट पाई परिबा, ए सब विषय जेतेबेला आमे पढौ पिला मानको वी कैन टेक द यूज ऑफ दिस डाटा एनालिसिस। आमे तापरे इंटरप्रिटेशन करिवा, डाटा नबा ताको एनालाइज करिवा, तापरे इंटरप्रिटेशन करिके आमे कंक्लूजन रे पहुंचीबा, देन इट इज कॉल्ड एज द डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मेथड। ओके, सेमती डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट माने जदी किछु गोटे डॉक्यूमेंट अछि, आमे गोटे बजेट अछि, माने करे गवर्नमेंट रे वर्ष बजेट आसला, बजेट डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, आमे ताकू नै कि एनालाइज करबा, आमे से बजेट टाकू नै कि एनालाइज करिया ए वर्ष गवर्नमेंट बजेट रे को जिनिस को अधिका इंपोर्टेंस देछि ना, ए वर्ष बजेट रे गवर्नमेंट हमर सबु डिफेंस डिपार्टमेंट को मेंटेन करिवारे अधिका पैसा खर्च करछि, आर्मी एयर फोर्स एवडा को अधिका पैसा देछि ना, एजुकेशन को अधिका पैसा देछि ना, हेल्थ रे अधिका पैसा खर्च करूछि, कोउथरे अधिका थिला कमी जाइछि, कोउटा कम थिला बढ़िछि। तो आमे जदी एमिति डॉक्यूमेंट को नै कि किछ एनालाइज करबे, दैट इज कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंट एनालिसिस मेथड। बुझिलो? Yes, ma'am. Yes, then next we will come to the collaborative. Collaborative रो अर्थ होछि collaborative method we are using for the different other subjects also, खाली जे इकोनॉमिक्स रे नुह आमे अलगा सब्जेक्ट जोटा कि पिला माने निजे सेमानक भितर कोलाबोरेटिव रो भी डिफरेंट टाइप कोलाबोरेटिव मेथड इज देयर हैना, जेमिति डिफरेंट मॉडल अछि, कोलाबोरेटिव मेथड रो भी डिफरेंट मॉडल अछि, से सब विषय रे बोले तमरो एथिरे दरकार नै, किंतु कोलाबोरेटिव मेथड रो अर्थ होछि पिला माने कोलाबोरेशन करिकी सेमाने गोटे मेथड गोटे वे रे गोटे कंटेंट को डिस्कशन करिवे, आ एज ए टीचर यू विल फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन जोडा कहू से टाइप रो सेमाने कोलाबोरेशन रे सेमाने डिस्कशन करिवे, सेमाने गोटे टॉपिक रे प्रिपेयर हेकि आसीबे, सेमाने को भीतर गोटे डिस्कशन हबो, आ टीचर थिबो एज ए ऑब्जर्वर, तमे निजे ऑब्जर्व करिवो सेमाने कोठी मिस करूचंदी, देन यू विल फैसिलिटेट देम, देन इट इज कॉल्ड एज ए कोलाबोरेटिव मेथड हैना। तो मोस्टली ए मेथड गुडा को हमें यूज करू टू टीच द इकोनॉमिक टॉपिक्स हैला। देन वी विल कम टू द लर्निंग रिसोर्सेस इन इकोनॉमिक्स, कोन कोन हमें लर्निंग रिसोर्स यूज करि परिबा इकोनॉमिक्स पढेला बेले, जेमति हमें ऑलरेडी जानि जे टेक्स्ट बुक इज ए लर्निंग मटेरियल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। कोटा कोटा कोलाबोरेटिव कोलाबोरेटिव माने सेमाने पिला माने निजे सेमानक भितरे डिस्कशन करिकि बुझिबे, कोलाबोरेशन रो अर्थ होछि सेमाने निजे निजे मानकर गोटे टॉपिक अछि, आ तमे डिफरेंट पिलां को डिफरेंट टॉपिक देछ, सेमाने निजे प्रिपेयर हेकि आसीबे, सेमानक भितरे गोटे डिस्कशन चलिबो, सेमाने डिस्कशन करिवे बुझि माने जणे जण गोटे पिला आ जण को बुझेइबो, किबा गोटे पिला गोटे टीम को गोटे टॉपिक देछि, सेमाने प्रिपेयर हेकि आसीबे, सेमाने बुझिबे, सेमाने निजे निजे कोलाबोरेशन करिकि बुझिबे, तमे सेठी कोन करिवो एज ए टीचर यू विल फैसिलिटेट। कोलाबोरेटिव रो भी अंडर कोलाबोरेटिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर, जेमिति पेयर हे कि कोलाबोरेशन करिवे ना टीम रे करिवे ना को टीम आगो प्रेजेंट कला पर जणे सेतला सिमुलेशन रे रहइबो, आउ जने आउ गोटे टीम करिवो, एगुडा सब बोधे तमरो बोधे नाही दरकार नाही जे डिफरेंट मॉडल्स। कोलाबोरेटिव रो अर्थ खाली तमे एतिकी बुझो जे पिला माने सेमानक भितरे कोलाबोरेशन करिकि डिस्कशन करिवे, as a teacher will be there as a facilitator, as a moderator, that is called as a collaborative method. To develop the teamwork, the main purpose of using the collaborative method is to develop the team spirit among the students. मैम कोलाबोरेटिव चाइल्ड सेंटर मेथड रे जीवो? Yes, collaborative method is a child centered method. आज्ञा मैम। तो ये हमें देखिबा कोन लर्निंग रिसोर्सेस हमें यूज करूचे, जेमति टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंटरी रीडिंग मटेरियल्स, चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। दीज आर द कॉमन थिंग्स हमें जो अलगा रे भी यूज करूचे, किंतु मोस्टली इकोनॉमिक्स पढेया पई हमर दरकार कोन ना हमें चार्ट यूज करू, डायग्राम यूज करू, ग्राफ यूज करू हैना, एगुडा को निहाती दरकार। जेतेबेले हमें इकोनॉमिक्स पढौचे माने हमें ताको ए सब यूज करबा निहाती दरकार, जेमति हमें टेबल्स
तापरे जे कोनोसी जिंस रो गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जेमति हमें डायग्राम करिवा डायग्राम टाणी के बुझेबा ग्राफ करी की बुझेबा एगुडा को जे मेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर टीचिंग द इकोनॉमिक्स ग्राफ रे भी विभिन्न प्रकार ग्राफ अछि जेमति मु कहउतली गोटे बार डायग्राम हैला कि हमर हिस्टोग्राम कि पाई डायग्राम लाइन ग्राफ एगुडा को मोस्टली यूज करा जाए टू टीच इकोनॉमिक्स भाबुची एटे बोधे सरीला बोधे हमर सबु आउ 5 मिनिट अछि तमर ओवरऑल ए सबु विषय रे जदी कोठी किछि डाउट अछि को आमे आउ 5 मिनिट डिस्कशन करिया से काली बोधे कोन बोधे टाइम थिला मु कटि गली ना समस्त कटि गलो क्लास क्लोज हे गला ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ मैडम क्लोज हो गला ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ क्लास क्लोज हे गला ना ହଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ ହଁ अच्छा अच्छा मु सब जाडी ओके लर्निंग टिके कहिबे कोन थोड़ा मैम कहूछ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग थार एटा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जोटा कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहउतले सेटा को ही एटा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बोली लिखछि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड माने कोन गोटे प्रॉब्लम दिया जियो पिला मानकु ताकू एनालाइज करिवे पिला माने तार से प्रॉब्लम रो कॉज फाइंड आउट करिवे ताकू एनालाइज करिवे और तार हमें सॉल्यूशन केमिति पाइबा दे विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ओके इट इज आल्सो ए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज ए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मोस्टली यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स रे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करू सेमिति हमें इकोनॉमिक्स रे मध्ये यूज करि परिबा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे जीवा मैम डिस्कशन मेथड रे चाइल्ड सेंटर मेथड रे जीवा नहीं इट इज ए बोथ टीचर एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड डिस्कशन इज ए both teacher and child centered method not only the purely child centered method and concept making को child कौन कहलो concept mapping concept mapping is also a teacher and child centered method concept mapping रो अर्थ होची जेतले हमें गोटे पर्टिकुलर कांसेप्ट को पढाया को जाउचे तार गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जेमति हमें गोटे फ्लो चार्ट करूचे सेमति तयारी करिया ए कंटेंट रे मते कोन कोन पढाइबार अछि तार सब कंटेंट कोन अछि ए सब कंटेंट अंडर रे आउ कोन कंटेंट आसुची ए कंटेंट पढाया पे पर्टिकुलर एग्जांपल मु कोन नेबी ताको जदी हमें गोटे टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी की हमें जदी पिलां को पढाइबा देन दे विल अंडरस्टैंड इट इजीली हैला तो सेटा को कहा जाय concept mapping itself is a teaching learning material concept mapping itself is a teaching learning method एटा को हमें गोटे TLM हिसाब रे भी यूज कर परिबा हमें आको गोटे मेथड हिसाब रे भी यूज कर परिबा अब एटा मैम अप्रोच और मेथड मैम अप्रोच और मेथड मध्ये रे डिफरेंस कोन अप्रोच होच गोटे ब्रॉड एरिया गोटे अप्रोच अंडर रे केते गुडा मेथड आसे जेमति हमें अप्रोच गुडा को कहले जे टीचर सेंटर्ड अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड बोथ टीचर एंड चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हैला अप्रोच इज ए ब्रॉड एरिया अंडर ए अप्रोच मेनी मेथड्स विल बी देयर हैला जेमति हमें कहचे ट्रेडिशनल अप्रोच बुझी परलो ट्रेडिशनल अप्रोच किंतु हमें ट्रेडिशनल अप्रोच अंडर रे हमर विभिन्न प्रकार मेथड अछि लेक्चर मेथड इज ए ट्रेडिशनल मेथड ओके सेमिति हमें जदी कहबा केवल डिस्कशन मेथड इज ए ट्रेडिशनल मेथड ओके so approach is a broad area from the point of view of the more involvement of the child of the student we are going to decide the approach ma'am assessment in social studies होतला कौन कहूचो सुना गलानी मते assessment strategies in social studies होतला काली तापरे जो बंद हे जाइतला हां काली तो टाइम हेतला बोधे बोधा 1 मिनिट की 2 मिनिट किला बंद हे जाइतला आमे सेति तो डिस्कशन करिथिले बोधे असेसमेंट कोन बाकी रहि जाइछि कहूचो मैम मोर गोटे क्वेश्चन खाली गोटे हमरो जगह भी डाउट सब गुडा का कंटेंट तो हम टच करि परिबानी काइना बहुत गुडा टॉपिक अछि 2 घंटा इज माने सफिशिएंट नुवा जदी तमरो किछि डाउट अछि तमे रखिता लास्ट जो दिन क्लास अछि तार लास्ट हाफ एन आवर हम से डाउट गुडा को डिस्कशन करबा आज्ञा मैम पीपीटी टिके हम सहित शेयर करिवे मैम गोटे एट लास्ट सब 4 दिन सरला परे मु पीपीटी शेयर कर देबी तमरो
ଆମର रीजनल सेंटर को शेयर कर देले से तम ग्रुप रे WhatsApp ग्रुप रे शेयर कर सुना जाउनी कोन कहछ तम वॉइस ब्रेक होछि ଯିବ मते किछि सुना जाउनी तम वॉइस ब्रेक होछि मेकिंग चाइल्ड सेंटर मेथड ଯିବ अरे कोन कहछि से आउ की कहिला मु सुनी पारुनी किछि मेकिंग चाइल्ड से कहउछन्ती कांसेप्ट तमर नेटवर्क की होछि तम वॉइस किछि सुना जाउनी मैम से कहउछन्ती कांसेप्ट मेकिंग टा चाइल्ड सेंटर रे जीव कि नहीं concept meaning both teacher and child center में होते खाली child center no because teacher has to prepare the concept जो भी केवल only involvement of the children are there and role of the teacher is as a facilitator those are called as the child centered approach okay तो जोटे टीचर पर अधिक काम थाए जोटे टीचर को कहिबार थाए those are called as the teacher centered किंतु जदि किछि नै only पिला माने पैसिव रहिबे टीचर ही सब करिवे then it is called as a teacher centered if both are participating equally then it is called as the child and teacher centered method मैम सेटा कांसेप्ट मेकिंग ना मैपिंग concept making कहले भी होबो concept mapping कहले भी होती रे जको एका कथा आगे आ किछि डाउट नो मैम ताले no then I make it class end करिबो we will end our class here मैम प्रोजेक्ट मेथड को Yes, ma'am. मैम तमे सुनो प्रोजेक्ट चाइल्ड ना टीचर रे जीवे प्रोजेक्ट मेथड इज a child centered method आज्ञा मैम okay so we will end our class here yes again tomorrow we will meet at the same time okay thank you all thank you Yes, ma'am. Thank you मैम Thank you, ma'am. Thanks. thank you Thank you ma'am yes